So request please allow us to send messages till 10 a.m. as sir I do my homework in the morning. Okay, I will do that. Generally I thought of closing it in the morning, so in the morning I had closed it. Perfect. So where are we placed now? Okay, perfect. So where are we placed now? We are looking at, if there are no questions, looking at the syllabus. Let's have a look at the syllabus once again. Are we done with things or not? And then accordingly we will go so that we are able to do justice to the syllabus. Geography population paper 1 and 2. So though the syllabus is for both paper 1 and 2, here we are talking only of paper 1. So I missed the chance of uploading the homework. Can I upload it here? No, Madhukar, you don't have to upload it here. You have to upload it on the group itself. So group को आज फिर homework देंगे because the idea continues. So some people had submitted the work. I think Brijesh had submitted the work. The first one to submit that was Brijesh. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. So we were talking about that, and I could fairly see that people had done the work in the right spirit. ठीक है. बहुत से लोगों ने सिर्फ वही क्लास वाला वो किया था. Let me talk about the first submission which was there yesterday. ब्रिजेश ने जो मैप बनाया था, the global thing, migration flashpoints and all that, I think I could see a lot of effort in that. So everyone, I would strongly recommend that you look at the map submitted by Brijesh. ठीक है. पहला वर्क उन्हीं का था. दो द सोशल कैपिटल का जो आपने ब्रिजेश लिखा है, आई फाउंड इट वेरी डिटेल्ड. इसको इट कैन बी कट डाउन. ठीक है. यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू सम बॉक्सेस और समथिंग. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यू सबमिटिंग योर होमवर्क. यू गेट अ फीडबैक देन एंड देन. Other people who have submitted, I can see the work of other people also. So I would say Brijesh was able to set a benchmark over there. बाकी लोगों ने भी mostly you were able to convert whatever was taught in the class, you were able to convert that into a write-up. I can see a lot of it on that. So more or less everyone was same when it came to doing the same work. But जैसा मैंने कहा कि ब्रिजेश का work, I would want you to see that. Get it? Otherwise, if you ask me, the works of Yash, works of Khushi, they were fine. Nilni, आपने जो मैप सबमिट किए हैं वो ठीक है. थोड़ा सा इसको और एनोटेट करने की जरूरत है. मतलब we can probably show those areas as regions. Otherwise, I found it more or less fine. जो क्लास में किया था आपने उसको अच्छे से मैप में कर दिया. ठीक है. अभी जो positives और negatives की जो listing की है, this one was, I was looking at this work by Murphy. I don't know what's your name, Murphy, if that is your real name. थोड़ा positive और negative में I am also looking at some of the context coming in. Otherwise, positive and negative, people who have listed it down. More or less सभी लोगों ने list down किया है. थोड़ा सा उस पे और पढ़ेंगे. And when we are looking at positives and negatives, I would also want people to look into the positive and negative from a spatial point of view. So that will make a huge difference in your understanding of positives and negatives. Otherwise, it becomes very, very theoretical. Is everyone okay? That is all which I want to give a feedback. Last one is Gaurav Thakur. Gaurav Thakur, your work was more or less fine. I looked at that. So यहाँ तक मैंने देखे थे. उसके बाद जो सबमिट हुए हैं, that particularly I have not seen. मैं इन पे फीडबैक फिर बाद में दे दूंगा. Generally first 5 minutes I keep for feedback. मेगा का मुझे कुछ काम दिखाई दे रहा है यहाँ पर. मेगा आपने बहुत क्रिस्पली काम किया है. Very well. You've done it crisply as a content material. That is good. तो थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट और डालेंगे. So that will make it more powerful. So एक तो ये कनकन का बचा हुआ है और किनका बचा? प्रियंका रॉय. So प्रियंका, मैं आपका फीडबैक I will reserve it for tomorrow's class. ठीक है. More or less आपने भी पॉइंट्स ही लिखे and things have been more or less the same ways. So I would want कि एक बार ब्रिजेश का जरूर देखें. Certain things you can incorporate and take from his work also. Everyone with me on this? Where are we placed now? ठीक है, एक बार सिलेबस भी देख लें. Sir, how to show social capital spatially? I use the concept of Brand line. अभी बताता हूँ इसको. There is a doubt coming from someone by the name Shefali says, I am a new student. I have one question. Is reading standard book necessary or notes are enough? Completed geography optional from other educator. Shefali, please. I have no answer for that. Your other educator would have told you. If you want to know, you can go to the course orientation and blueprint lecture of this course. ठीक है. बाकी एजुकेटर से आप सारा कोर्स कर ही चुके हैं. I'm sure उन्होंने बता दिया होगा आपको. बाकी आप चाहें कोर्स के बारे में क्या है, तो देयर इज अ फर्स्ट क्लास व्हिच इज कॉल्ड कोर्स ओरिएंटेशन एंड ब्लूप्रिंट. मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा वैसे तो आप सब पढ़ ही चुके हैं. तो दैट इज देयर. हाँ बिल्कुल है शेफाली. यू हैव ऑल द राइट टू हैव अ डाउट. सो आई एम सेइंग प्लीज अटेंड द कोर्स ओरिएंटेशन एंड ब्लूप्रिंट. दैट सेशन विल हेल्प यू अ लॉट. चलिए बाकी लोग. सो वी आर गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द सिलेबस एंड द पीवाईक्यू. सो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, आर वी डन विद दैट?
एंड सबको अपना आंसर का जो भी होमवर्क वी आर सबमिटिंग, मेक श्योर यू डू दैट. योर फर्स्ट 5 minutes आर फॉर दैट ओनली. यू गेट एन इंस्टेंट फीडबैक ऑन द वर्क व्हिच यू हैव डन. दैट हेल्प्स यू ग्रो इन द प्रोसेस. अदरवाइज सिलेबस खत्म करने के लिए तो मैंने हमेशा बोला है, यू हैव अ होल लॉट ऑफ वेल टीचिंग यू ज्योग्राफी. Demographic attributes, we have talked about them. Yes, we also mapped them. Have we mapped them or not? Now we're looking at causes and consequences of migration. ये भी हो गया. Overpopulation, underpopulation, population theories, are they done or not? So today we are going to talk about world population problems and policies. Today we are going to talk about this. Population as social capital has been done, and we will continue from that point of view in the topic of the day, which is social well-being and quality of life. So with this we will finish the syllabus. I hope you can see that most of the things are going as per syllabus. But कल आपने अगर class attend नहीं की, we were talking about which class? Yesterday we were talking about something. I think we talked about climatic classification. We started with Köppen. अगर मिस किया है तो उसको प्लीज कंप्लीट कर लीजिए. Yes, please complete that. That will help you. ठीक है, तो वी आर डूइंग दिस. इसमें हमारे पास पॉपुलेशन पॉलिसी में कोई क्वेश्चन है. In population planning, the thrust of the government of planning the population, not the plan for the population. Okay, I would say more of this part, this problem, this policy part is coming more from paper 2. Paper 2 से ज़्यादा आता है. So not from paper 1. Paper 2 is more of a area where this thing happens. So I am keeping that. Shivam is saying, sir, I missed the opportunity to submit my homework yesterday because of some family issues. We'll submit it today. Yes, I will open the submission window. Please, everyone, if you were not able to submit, don't worry. I want to see your work. तो आप प्लीज सबमिट करिएगा एंड आई विल ओपन द विंडो अगेन, क्योंकि आज कुछ काम देना मुझे आपसे मैपिंग करवानी है ऑफ वेलफेयर मैपिंग. ठीक है, वेलफेयर मैपिंग का भी आज आपको होमवर्क देने वाला हूं. सो देयर इज अनदर एसोसिएटेड होमवर्क, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इज एवरीवन ओके? अब हमने कल बात किया सोशल कैपिटल. डिड वी टॉक अबाउट सोशल कैपिटल? कैन आई से इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल कैपिटल? वी आल्सो नो, and I also wanted people to think and link and bring that idea in your submissions. Most of the submissions were just done like by a list of positives and negatives of social capital. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि social capital is more than that. Social capital पे अगर आप लिख भी रहे हैं तो there has to be some aspect of you coming in it. ठीक है, बहुत क्लियरली समझ लीजिए. जो टॉपिक्स आ गए ना, ये कुछ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है. These are socio-economic aspects of human geography. You can very well understand from that. तो यहाँ पर क्या लगने वाला है? ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो बहुत डिफिकल्ट है. जैसा किसी ने मुझसे भी पूछा, सर नोट से हो जाएगा, मेरे एजुकेटर के नोट्स हैं या समथिंग है. आई होप माय स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट टू क्लियर द एग्जामिनेशन व्हाट विल बी नीडेड. और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग किन किन इनपुट से आती है, तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड कि भाई आप जो है कोर्स ओरिएंटेशन देख लें, दैट विल टेल यू मोर अबाउट दैट. ठीक है, सो आई होप यू आर नॉट कॉट इनटू दैट. तो मैं जो कल आंसर में एक्सपेक्ट कर रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग इन योर होमवर्क फैक्ट, कंटेंट, notes plus what? Your brainstorming. This was missing. तो जैसे मैंने कहा कि ब्रिजेश के मैप में I could see that element of brainstorming in that I could very well see that. तो इसलिए मुझे लगा कि ब्रिजेश ने कोशिश तो किया. बाकी केसेस में मुझे थोड़ा और वो भी कम लगा. Is everyone with me on this? So if you are able to bring that will work. So can we draw a U-shaped graph for the value of social capital with respect to development in society? I don't know, Shivam, that has happened or not. See, it's very difficult to come to this conclusion that as development has happened, social capital has been lost. But yes, broadly we understand that we become more materialistic, we become more individualistic. इसलिए कुछ चीजें हुई. ठीक है, तो ये कहना कि as development is happening, this is what Shivam is suggesting, and as development is happening, first the social capital increased and then it decreased. इसको कहा जाता है inverted U graph. Do you get that? So this is social capital and this is time and development. So with time, initially it increased. So I want to ask you that, does it increase? So that is also. अच्छा, नॉट इन्वर्टेड आपका नॉर्मल यू है, तो नॉर्मल यू में आप क्या कहना चाहते हैं बताइए मुझे. यू का कैसा होगा कि पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा? यू सेइंग दैट, व्हाट मेक्स यू से दैट आल्सो, वो भी बता दीजिए. सो इनिशियली सोशल कैपिटल विल रिड्यूस एंड देन इट विल इंक्रीज विद डेवलपमेंट. दिस इज व्हाट यू सेइंग. So can we draw a U-shaped graph of value of social capital where with respect to development? So how will this happen? ये तो बताइए मुझे. I get that, I get your ideas. I have tried to bring your ideas into a graph. So everyone, Shivam has brainstormed something. I want you to think about the validity of it, that with time first it goes down and then it starts increasing. ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे brainstorming चाहिए था. I wanted that to happen. फिर किसी ने कहा मैपिंग कैसे है. So some people are really mechanically, I was reading some of the answers submitted. Some people have mechanically put that rural areas have social capital, urban areas lack it. So you can't go with that extreme proposition, because in rural areas also there are places you will find such as the population in Indian villages are growing, they have become overgrown villages. We see people lacking that social capital on many counts. Yes, the meaning of development changing, modern meaning of development. So बहुत सारे उसमें नए नाम आ जाते हैं, नए आयाम आ जाते हैं. So very difficult to say that it is just related to that. Is everyone with me on this?
So this is what I wanted everyone to keep that in mind. So you may say that it apparently seems that the rural traditional agrarian societies still hold a much higher social capital, apparently seen, compared to many urban cosmopolitan societies. Is that okay? That's a way of saying things. That's a way of saying things. So ये आपको बोलना आना चाहिए. You cannot come to that blanket conclusion that this is happening. Is everyone okay? ये तो आपका हो गया सोशल कैपिटल. एंड सोशल कैपिटल आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि भाई सोशल कैपिटल में आने के लिए टू अंडरस्टैंड सोशल कैपिटल वी नीड टू हैव सम ब्रेनस्टॉर्मिंग आल्सो. विदाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग इट वोंट हैपन. इज एवरीवन ओके? तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? नाउ सोशल कैपिटल के बाद क्या आ रहा है? सोशल वेलबीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. ट्रू. syllabus is talking about social well-being and quality of life. Now the question is social capital. Yesterday I told you social capital has got nothing to do with geography. Remember, social capital has got nothing to do with geography, but we did bring it. Social well-being. What is social well-being and what is quality of life? Does it have something to do with geography? If it has, very good. If it does not, then it's a big problem. True or not? Is everyone with me on this? तो ये एक चैलेंज होने वाला है. So think about it. Think about it. How will we look at that? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए what is this. So can we say social capital is a complex phenomenon which impacts other factors like development, but vice versa is rarely true? शिवाली, sentence तो है but confused हो गया हूँ मैं भी. Can we say social capital is a complex phenomenon? I'm okay till this point. Complex phenomenon which impact other factors like development. So social capital will impact other factors like development, but vice versa is rarely true. Now this question says that it is rarely true. Why not? Shivali, it also depends on the model of the development you are choosing. If you are choosing a capitalistic exploitative model, then it may not be conducive of social capital. But if there is a model, say for example the model adopted by Bhutan, that may involve social capital also growing. True or not? If there is a country where the leadership, the politicians are dividing the society and development is happening. So development is happening, but social capital is not happening. On the other side, if a country is at uniting the society, creating those bonds in the society, and the development for some time has slowed down, so there it can be that. So I'm not saying that development is not doing that. So ये link करना थोड़ा मुश्किल है. I don't know whether you were present in yesterday's class or not, but social capital will involve much wider connotation. So that is there. Is everyone with me? तो हम बात करें social well-being क्या है? Social well-being. What is social well-being? What is social well-being? Everyone, what is social well-being? समाज का कल्याण. बहुत अच्छा है, हिंदी अनुवाद कर दिया तुमने. अच्छा चलो. Have you heard of something called as means? Something called as goals? Can I say it is the goal of a welfare state? Purvi says it is trusting relationships that allow one to support another. Purvi ऐसे सेंटेंस ना, these are called, मैं बड़ा अच्छा सेंटेंस है. अभी एक शिफाली ने भी ऐसा सेंटेंस यूज किया. तो ये सेंटेंस पता क्या होता है? इनको इंग्लिश में we call them as waffling. Do you know what is the meaning of waffling? Waffling is a generalized sentence which carries no specific meaning and can be applied anywhere and everywhere, which is neither wrong nor correct. आप समझ रहे हैं? इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ linguistic gymnastics. It is trusting relationships that allow one to support another. ये मैंने ऐसी कुछ भाषा सोशल कैपिटल में खूब सुनी. बिल्कुल पूर्वी ने कहा कल का काम किया था. तो पूर्वी मुझे पता नहीं ये भाषा जो है सोशल कैपिटल के लिए होती है बिकॉज़ इट इज अबाउट ट्रस्टिंग रिलेशन. अच्छा एक बात बताइए, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलबीइंग में मुझे लगता है द ओल्ड एज पीपल दे मस्ट हैव सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी. आप बताइए. I have this answer that social well-being is social security for everyone, and your answer is trusting relationships that allow one. अच्छा अब मैं एक और चीज कह सकता हूँ, it is a complex phenomenon. True, it is a complex phenomenon. So that did not solve anything for me. Am I able to guide something, arrive at something or not? So वो भाषा को कहा जाता है specific language. So bring specificity in your thinking and writing. That's my suggestion to all. चलिए ठीक है. मुझे लगता है good standard of living. अच्छा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ. Nothing ambiguous in this. Social security का मतलब आपके समाज में अगर आपको जॉब नहीं मिलती, suppose you don't have a job, they will give you something for that. Social security, you are an old age person, you are dependent on others, they will help you on that. That is social security. जब मैं standard of living की बात कर रहा हूँ everyone, I am not talking about quality of life. I am talking about economic resources. I am very specific. मैं चाहता हूँ कि social well-being में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सभी लोग.
एक तरह के समाज में आपके पास सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए. दिस विल ऑल्सो गिव यू एक्सेस, नहीं एक्सेस तो नहीं करना चाहूंगा मैं इसमें, लिविंग कंडीशंस आर इम्प्रूव्ड. यस नो. आई विल आल्सो लाइक टू ब्रिंग इन दिस, सबको समाज में जॉब मिलना चाहिए. यस नो. सो कैन आई से बेसिक नीड्स शुड बी मेट. बेसिक नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान, फूड, यस, क्लोथिंग, शेल्टर. मुझे तो लगता है बेसिक नीड इज आल्सो एनवायरनमेंट. यस नो. मुझे लगता है बेसिक नीड इज आल्सो एजुकेशन एंड स्किल. And I can give you a cheat code, everyone. I can give you a cheat code over here. Do you know what the society needs? 17 SDGs. True or not? Fear from hunger, fear from disease, fear from malnutrition. कुछ भी डाल सकते हो. Good environment, education, skill, employment. होना चाहिए ना social well-being में. But I want to tell you, everyone. I have talked about all this. This is only material part of it. True or not? Material or tangible, measurable part. एक बात बताइए. There can be a non-tangible part of social well-being or not? Non-tangible आपको क्या लगता है? I think one non-tangible thing that yesterday we were talking about is social capital. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Can I say social capital? Non-tangible, something that you cannot touch. Should it be there or not? In Ukraine, what is missing? What is missing in Ukraine? Peace and harmony. Non-tangible, social well-being should include that also. ठीक है? Social capital is about this. So let me go to the other stage. तो मुझे लगा कि there should be peace and harmony. Well-being. I'm talking about well-being. Get that? Ajay, tell me, you are a girl child and you really want to take on the job in defense forces. Yes. And your parents feel नहीं ये सब काम लड़कियों के नहीं. True. I'm saying there are women in the defense forces, but come on. True or not? Uber driver. Have you seen female taxi drivers? Very few are there. Pink taxis. We are listening to that. No, these works are not for this. Okay, you are a man and you want to get into fashion, quick sewing, designing कपड़े सिल रहा है, और you want to be a chef. Many people will say यार ये कैसा काम करे, लड़कों का काम नहीं. अब now these are strange gender stereotypes है या नहीं? Do we have gender stereotypes? तो society में do we look for acceptance? Social acceptance. Social well-being is social acceptance. Yes or no? People should accept what I'm doing, accept the way I am. If a person is homosexual, your sexuality, your gender, even we are talking about food, ये खाना है वो नहीं खाना है. A society that questions what you are eating, true or not? What you are wearing, girls should not wear this. You should not listen to such music. You should not watch such movies. True or not? We're talking about it. I'm saying it is not about spreading immorality. I'm saying within the moral fabric, you're taking away those freedoms. There is no acceptance to anything new. That's a very big challenge. True or not? Acha, I'm saying equal access or choices to goods and services, to opportunities. Do we have them? Do we have them? Do we still have certain jobs reserved for certain menial jobs reserved for certain communities? अभी भी हैं कुछ ऐसी jobs? Yes or no? Is this the reality or not? अभी भी लोगों के past में the caste or some ways are we discriminating them or not? And because of that, सबका साथ सबका विकास. So do we see lack of integration? So I want what? Integration and coherence. Integration and coherence in the society. हम किस में चल रहे हैं? Imagine two very big days, two very big festivals for the Hindus and the Muslims, and they are creating tension. Is that integration and coherence in front of us? That is social well-being. That is social well-being. So a festival is coming. I am from one religion, other person is from another religion. The joy they had about the festival, the memories, the beautiful memories they had about the festival, they are no longer there. What is there? The fear. Something wrong might happen. A code दिया जा रहा है कि like follow this code so that nothing wrong happens. कैसे? मतलब is that social well-being? Where people need it? क्यों? And मुझे ये भी लगता है social well-being में it is also about social feeling. One feels like contributing to the society. True. For me, that would be social well-being. मुझे लगता है social well-being is physical, yes, mental, psychological, emotional, even ecological.
True or not? So you are forced to live in a region where the air quality index is one of the worst. Get it? So I was reading somewhere recently about a water body in Uganda. वहाँ पे वही water body, वहीं से पानी आता है. Either animals also drink, humans also drink. Every year, millions of children die because of diarrhea. DIAORRIAH, diarrhea. Happening or not? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर social well-being है. Ecologically, the society is in distress. True or not? I also see absence of stressors. Absence of stressors as well-being. They've already there are stressors. No, the girls can't do this, the boy can't do this. और वो सारी बातें अगर हो रही है, तो challenge होगा या नहीं होगा everyone? Will there be a challenge or not? So that is what I am trying to hint at is your social well-being. So you have peace and harmony, you have social acceptance, you have access to goods and services. वो physical हो गया, and then the metaphysical one also. Is everyone okay? Do we understand what is social capital? No, sorry, not social capital, well-being. अब बात ये आता है कि well-being तो समझ में आ गया. Well-being तो समझ में आ गया. Where is geography in this? Where is geography in this? तो विशांत को geographical कैसे बनाना है? जल्दी से बताओ. Spatial. तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है इसके spatial signatures हैं क्या? Are there spatial signatures to this? Does everything have spatial signatures? What do I mean by spatial signature? वो मैप में दिखता है. तो पूर्वी क्या इनका मैप है? क्या कोहेरेंस का मैप है वर्ल्ड में? सर्वेश्वर सिंह कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? Is this a measurable thing? Opportunities, choices, peace. Sir, होते हैं. There are maps. There is a happiness index. Happiness index. अच्छा. There is a human development index. Okay. There is poverty index. Okay. There is gender empowerment index. Gender empowerment index. There is what else? और क्या इंडेक्सेस हैं? बहुत सारे नाम जो आपके दिमाग में आते हैं, जल्दी से बताइए. और क्या इंडेक्स हो सकता है? मुझे सोफी याद आता है, स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी वाला जो वो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इक्वालिटी इंडेक्स. ये तो बहुत सारे होंगे, कितने याद करोगे यार? नेशनल ह्यूमन फिजिकल इंडेक्स, जीनी कोफिशिएंट, कुछ ने नया बता दिया जो इनकम इनइक्वालिटी से है, बट मेरी ये समझ में नहीं आ रहा. व्हाट आर वी डूइंग? सो वेयर वुड यू एक्सेस दिस एब्सेंस ऑफ स्ट्रेसर्स? सो देयर इज अ गर्ल who is a taxi driver. This Uber cab driver. Are there stressors or not? Even to her safety. True. किसी ने कोई स्टडी किया इसके बारे में? Has anyone done any study on this? No study. Absolutely no study. Now how do you convert this into geography? So फिर से बोलो, हर चीज में मैप नहीं है बच्चों. Human geography में. Now people who have some, they can let us see how many of you are able to think a little more. How to make your answers geographical. फिर मैं वही कहता हूँ, notes ये देते हैं. Notes are always dead. Yes or no? Notes are always dead. तो कैसे करेंगे? How do we make it geographical? जल्दी बताइए. If you are around, आपने कहा notes enough. So these are your notes. I'm sure you would have got some of the ideas from some other educator also. How would you make this answer geographical? My students, how would you make this answer geographical? If you say temporal is a word for history. Now many teachers have this habit. Oh, let us see when did the quality of life, this idea, social well-being started. It started with Alexander the Great. वो तो नहीं होगा. That is not geographical. हाँ, ब्रिजेश ने कुछ आइडिया लगाया है. Sir, we can attempt a regional synthesis or areal differentiation without using a map. So Brijesh, I like your idea. You are thinking in the right direction, but knocking at the wrong door. Let me give you a hint. We are saying map is not possible. You know, map is not possible over here. There can be some case studies. Regional case study possible है. There can be some regional case study, but map is not possible. Now you are saying, sir, instead of this, I am going to use regional synthesis and areal differentiation. Remember, regional synthesis and areal differentiation are also chorological. They are also based on map only, na bache. Regional theme. They all are in the regional theme. So good that you knocked on perspectives. Very good. But you knocked on the wrong door because both of them are regional. Map or no map? अब सोचो किस डोर पे नॉक करोगे? Think about it. शेफाली, आप हिस्ट्री कह रहे हैं, टेम्पोरली वो बता दो क्या करना चाहते हो. आई हैव नो इश्यूज. आई एम सेइंग ऑप्शनल टीचिंग इज मोर अबाउट आस्किंग यू, चैलेंजिंग यू, मेकिंग यू थिंक, एंड देन यू कमिंग टू एन आंसर. क्योंकि ये तो डेड चीज है ना, ये तो हमारे हैंडआउट में मिल जाएंगी कि भाई क्या है, बेसिक सर्विसेज होना चाहिए, दिस थिंग. सो फुल भी कह रहे हैं ह्यूमनिस्टिक और वेलफेयर. अब कुछ आया, ह्यूमनिस्टिक एंड वेलफेयर. कैन आई से इडियोग्राफिक स्टडीज?
Remember, not the quantitative studies. Ideographic, every case is unique. True or not? Are you with me on this? अगर आप हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है? तो ये कैसे डालें सर? ये तो डालना बड़ा मुश्किल है, मैं बताता हूँ आपको कैसे डालना, मेरा काम ना। क्या हो गया? The page is not changing. Let me see. Why am I not going to the next page? Okay, add a slide. It has to. Perfect. So I remember telling you about this guy, William Bunge. He says geographers should not plan for the people. They should plan with the people. Okay. When you plan with the people, what do you get to know? You get to know the felt needs of society. True or not? You get to see the parameters which will lead to well-being of the society. True or not? So can I say in 1970s, the paradigm shift witnessed by geography of not seeing human beings as points or quantitative data, of not seeing human beings as points or quantitative data, rather seeing them as individuals, people, and society, took a turn towards well-being, social well-being. Make sense? अब ये geographical है या नहीं? The big champion of welfare approach, D.M. Smith. D.M. Smith said that geography should be concerned with who gets what, where, how. Who means all sections of society. True? All genders, all communities, yes, all ethnic groups. Make sense? So, अगर geography is focusing on this, will well-being come to the center stage of geographical inquiry? Will geography come to the center stage of geographical inquiry? So if I say the study of social well-being acquired the center stage of human geography post 1970s with the advent of welfare geography, where the focus shifted from just a spatial aspect to a more holistic aspect, where geographers were supposed to find out who gets what, where, and how. The welfare approach says, geographers have to become a diagnostician. क्या बनना चाहिए उनको? Diagnostician. Diagnose the real problems, and suggest ways to deal with it. तो बताइए, एरियल डिफरेंशिएशन करना, रीजनल सिंथेसिस करना है या ये करना है? जल्दी से बताओ क्या करना है? What do you want to do? Aerial differentiation or welfare geography? Welfare geography is the paradigm. If you bring this aspect in your answering, आपका आंसर geographical हो जाएगा. Your answer would become more optional like. Otherwise, writing those dead notes which the teachers and the books have given us, ये सब लिख के आगे social well-being, good standard of life है, social security, everything है. अरे मैं तो कह रहा हूँ कि development है. But which development? Welfare geography says development which is for all, everywhere. Which development? Sustainable development. Yes, sir. Who gets what? Everyone. What does he get? One is goods and services. True. But I said only not just tangible things, intangible things also. No. What is intangible thing? Peace of mind, opportunities, good environment, good job, access to internet. Access to internet is a part of social well-being. Yes or no? Access to information, justice. Access to justice is this thing. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन फंसने लगते हैं कि भाई ये क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी में आ गए तो आप उसे ज्योग्राफिकल बनाएंगे कैसे? There are so many people who given multiple means. They come to me. So my answers are there. I had the content. I just copied, whatever my teacher told me. I just mucked them up and I wrote them. Marks नहीं आ रहे sir. Multiple attempts have happened. Who's there counting your words? Who's there counting your ideas? And honestly tell me, you two have not even brainstormed. You two copy pasted what somebody told you. He copy pasted from somewhere else. So actually everyone ends up writing that or no? तो जैसे ही पूर्वी ने वो लैंग्वेज यूज की, ऐसे पूर्वी ये सुना लग रहा है. कहीं पे सोशल कैपिटल में मैंने सुना है ये जो रिलेशंस और लिंक्स की बात है, जिससे हाँ कल सोशल कैपिटल का होमवर्क आई डिड दैट इज व्हाई आई रोट दिस ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स एंड अलाउइंग वन टू सपोर्ट अनदर. सो आपकी लैंग्वेज से पता चल जाता है, पता चलता है या नहीं चलता है? एवरीवन. I don't know whether I shared that story with you or not. One of my friends, he was the class topper, and the teacher said copied in the result. We used to sit together, both of us, and the teacher said copied. Everybody believed that this boy cannot copy, but the teacher was very clear that he has copied. Yes, sir. What was the catch? He had as it is reproduced what was written in the book, including the figure number also. So आपको लगता है कि अगर वही नोट्स छाप देंगे, because टीचर ने सॉलिड गांजा पिलाया, you really feel भाई से आता ये दे दिया मुझे, तो ऐसे लिख रहा है as shown in figure 14.23. ये भी लिखा था यार उसके आंसर में.
Teacher showed me just ridiculous. How can you write this? Biology का paper था. As shown in figure 14.23, refer to this. I asked him, क्या वे? He said, "Bhai, I'm so afraid of biology. I mucked up everything." And he was the class topper. So you know the recipe of class toppers. So many of you arrogant with your scores. अरे मैंने university top किए. औकात में रहो. University में nobody knows you. The time you were in the college, no. You were that किताबी कीड़ा कहीं पे बैठ के रट रहा था. There are other people who lived university and college. They lived much better than you. True or not? So please marks से कुछ वो नहीं होता. और अगर आपको लग रहा है यूपीएससी उसी पे मार्क्स देने वाली है, जो आपने सोनू मोनू चिंटू सर के नोट्स लिखे, सोनू सर, मोनू सर, चिंटू सर, सचिन सर, हमारे नोट्स जाके छाप के आ गए उधर. अब हो गया, आप तो देखना सचिन सर का आशीर्वाद है, मैं पास हो जाऊँ. True? That should not happen. So somebody wrote just before the class, somebody sent me a message saying, "Sir, I have been preparing, as you said, I have done 2 revisions, I have done, a lot of memorization and everything. But I recently heard, like many people said that you must have done 40 to 50 mocks. So I've only done 10 to 12. What should I do?" So everyone, this is the time to test or not? So the person is all prepared. Why have you given only 10 to 12 tests? Is it fair? आप कुछ सोचिए ना, तैयारी तो आपने कर ली, आपने क्या किया अभी तक? You mucked up things. But UPSC, the prelims itself involves a lot of right brain. Remember right brain, people who attended the class, left brain, right brain. तो मैंने इनको इस टाइम, दिस पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो मैंने इनको बस एक ही चीज कही है, दैट डोंट वरी, यू डू ओनली वन थिंग, यू जस्ट गो एंड गिव 1 टेस्ट डेली. इनफैक्ट मैं 2 भी लिख सकता था, मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज़ आई हैड टू स्टार्ट द क्लास. आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स 2 टेस्ट डेली, 1 न्यू टेस्ट and 1 old test which you had already given, which will act as a revision also. So again, say, you smart people, you are interested in Sachin sir's notes or your selection. If you're interested in your selection, you do whatever is needed. Brainstorming is needed, Sachin sir's note is needed. If some places you feel there is a gap which the book can fill up, वो कर लीजिए. ठीक है, चलिए. तो ये भी बता दिया कैसे इसको ज्योग्राफिकल करना है. अब सर ये वेलफेयर हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा. रिमेंबर आई जस्ट गिव यू पर्सपेक्टिव का फाउंडेशन, those 6 classes. Now at least you know that these people are there. अब डर तो नहीं लगता इन नाम से. We will have them in detail also post prelims बात करेंगे. ठीक है, everyone with me on this. So we are talking about social well-being. We have talked about social well-being in various ways, but yes, I would strongly recommend सभी लोग ये भी देखेंगे. Geographer's task can be into diagnosis. Extent of social being हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Extent and parameters can be determined, diagnose. Then we can do planning inputs. Can we give planning inputs to the people who are into actual plans? वो दे सकते हैं हम, and देना भी चाहिए. Is everyone okay? That is the second aspect of it. And third can be welfare mapping. Welfare mapping. Is everyone with me on this? Welfare mapping अगर की जाए तो क्यों नहीं? कोशिश करें welfare mapping. Let us try doing some welfare mapping. एक मैप बनाएंगे, well map quickly. Everyone with me on this? So कैसे ही मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सोशल सिक्योरिटी कहां पर है? Where is social security in the world? Social security in the world, where is it? Quickly tell me. Is it developed countries? So can I use the brand line here also? So my brother is in Australia. He says, when a child is born in Australia, all his education is free. And the government schools in Australia are very good. They will take care of it. If you paid for your insurance, health insurance, all your health needs will be taken care of by the state. During the COVID times when there was, issues with traveling, movement, jobs going, he said I was getting incentive for that also. Joblessness ka, US ne bhi banta. Is that a kind of social security or not? True, everyone. But you hear of China and the forced lockdowns. So यहाँ social security Shanghai में, Beijing में मैं cross कर दूँ, कर सकता हूँ social security. Do you think Russia में social security सबके पास है? Or the oligarchs and that is there? So are we calling them dictators? No, I'm not talking about dictators. But there is a lot of crime over there. आपने सुना lot of crime, lot of mafia in Russia. तो मैं वो कहना चाहता हूँ. ठीक है. इंडिया को मैं क्या करूँ? इंडिया को मैं टिक मार्क करूँ social. So
सब चंगा सी कह के I can take mark also. But I've seen people in old age, they don't have the resources. Yes or no? Today the High Court has asked the Bihar and the UP government to tell how many corpses were floating in Ganga. Yes or no? Government went to the extent कि कोई मरा ही नहीं COVID से. True. The figures which the world is giving, WHO, they are all wrong. I accept they are wrong. I accept they are wrong. But the ones which were floating, which we saw, the crematoriums which were walled and no picture allowed in that. True or not? So the patriot in me says put a tick mark. Yes. The bhakt in you might say put a tick mark. Can I put a question mark? And when I say question mark, I'm saying question mark is big one. Yes. I'm saying Turkey, Erdogan. Turkey will have it. No chance. Yes. Civil war, Sudan होगा. Nigeria में यार social security आज जिंदा है कल मरे कोई पता नहीं. Social well-being. So can we see most of the process will come over here? If not cross, then it will be question mark. True or not? We'll be saying, but India's social security is not that bad. So Purvi, what is social security? One social security is about pension. आप बताइए बुढ़ापे में ओल्ड एज में क्या है पेंशन? आप कह रही हैं सोशल सिक्योरिटी मैंने पहली बार सुना है कितनी बुरी नहीं. बुढ़ापे में आपकी मेडिकल केयर एंड ऑल दैट. आई हैव टू सीन पेशेंट्स एक्चुअली गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड आस्किंग द डॉक्टर इन पे और पैसा लगाने की जरूरत है भी या नहीं है. अपने माँ बाप के लिए पूछते हैं. सोशल सिक्योरिटी से पूर्वी आपका मतलब क्या है? अपने माँ बाप के लिए पूछते हैं कि इनको ये अभी बीमारी है, इनके लिए पैसा लगाना है, इन पे नहीं लगाना है. दैट्स द क्रूअल रियलिटी. आप कह रहे हैं इंडिया में सोशल सिक्योरिटी. आप बताइए क्या बुढ़ापे का इंश्योरेंस है हमारे पास? एंड इंडिया की बात करो, आपकी नहीं बात करो. आपको लगता है इंडिया में सोशल सिक्योरिटी है? सोशल सिक्योरिटी अभी तो बताया. सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपको डर है किसी का. सोशल सिक्योरिटी अभी मैंने आपसे कहा बुढ़ापे में, बचपन में, एज चिल्ड्रन, गरीब बच्चा ऑर्फन, इज इट प्रोन टू अब्यूज और नॉट? या कोई भी गरीब बच्चा उठाया जाता है तो उसका ख्याल रखा जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आपने कहां से पढ़ा कि सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क हमारे पास है. तो वही वाली बात है, आप हिंदी मीडियम से सोच रहे हैं उसको सोशल सिक्योरिटी हमारे समाज में सिक्योरिटी है नहीं. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. मैंने कहा पेंशन, इकोनॉमिक एसेट्स रहेंगे नहीं रहेंगे, हेल्थ केयर रहेगा नहीं रहेगा. ओल्ड एज होम आपने सुने? लोगों को डर लगता है ओल्ड एज होम में जाने के लिए. क्यों डर लगता है? आई हैव नो इश्यूज. देयर शुड बी वेरी गुड ओल्ड एज होम्स, गुड मेमोरेबल ओल्ड एज होम्स होने चाहिए ना ओल्ड एज केयर के लिए. व्हाई नॉट? व्हाई शुड वी सी लाइक दैट इज देयर? अच्छा एक बात बताइए, बच्चे ऑर्फनेज में जाते हैं, अनाथालय में जाते हैं. समटाइम्स इट सो हैपेंस फॉर सम बैड रीजंस, सम ट्रेजेडी, दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स. कितने लोग, अब एक बात बताइए, ड्यू टू कोविड मेनी चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स. नो heard of that? Corporates came and said we will support them. उनका एजुकेशन भी सपोर्ट करेंगे. You heard of that or not? Is it really happening? Is it really happening? कितने बच्चे ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए? Is there any count? Do you count that as social security? I have a question mark on that. आपको कहीं पे दिख रहा हो तो ठीक है, अच्छी बात. चलिए ऐसे मैं ले आता हूँ क्योंकि आपने पूछा तो I can add to this that like एक ना ऑस्ट्रेलिया में, since I was talking of Australia, there is a center for quality of life. It has a center for quality of life. वो स्टडी करता है and they create a well-being index. ठीक है, उसमें they have involved standard of living, personal health, life achievement, personal relations, community connections and future security. इसको वो कहते हैं पर्सनल वेलबींग इंडेक्स. आप मुझे बताइए इंडिया में, आपने कहा सर इंडिया में तो अच्छा है, तो क्या ये है? जल्दी से बताइए, इज इट देयर? क्विकली टेल मी, क्या ऐसा है? तो आपको दिखाई दे तो अच्छी बात है. So that's what I'm saying. कि ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको यूज करने पड़ेंगे. एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम वेलबींग. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिफरेंट. क्वालिटी ऑफ लाइफ के ये पैरामीटर्स हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी डिफरेंट. ट्रू. मुझे तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी लगते हैं. मुझे लगता है कि कल्चरल इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, द ड्रीम्स व्हिच वी हैव. ट्रू. मुझे ये भी लगता है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन. इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? सो ये सारी चीजें अगर नहीं है और हम अपने क्वेश्चन में ये नहीं सोच पाते हैं तो प्रॉब्लम है भाई. तो बताइए अब नोट्स का क्या रोल है? नोट्स आर रॉ मटेरियल, कच्चा माल. यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू दिस थिंग एंड डू यू हैव द प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग एट इट. सो ये थोड़ा सा समझना एक प्रॉब्लम हो गया. तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो एचडीआई मैपिंग करेंगे. आज का होमवर्क इज एचडीआई मैपिंग. कर देंगे सर? हाउ डू वी डू दैट? तो एचडीआई स्कोर क्या होता है? 0 to 1 होता है ना. 0 to 1.
क्या है? तो इसको 3 में डिवाइड करिएगा, हाई, मॉडरेट, लो। कर सकते हैं हाई, मॉडरेट, लो, हाई, मॉडरेट एंड लो, 0 to 1। देखना 2021 का एचडीआई इंडेक्स यूएनडीपी छापता है। लुक एट द वैल्यू वाइज आ जाते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज विल बी ऑन द टॉप, अराउंड 0.7 के ऊपर उनका रेटिंग होगा। यस, इसको आप 0.3 या 0.4 के नीचे ले लीजिएगा, कट ऑफ ले लीजिएगा। 0.4 to 0.6 के बीच में, 0.5 0.6 को मॉडरेट ले लीजिएगा। पॉसिबल एवरीवन, कैन यू डू दैट? बट दैट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब एक बात बता दो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स: एजुकेशन, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड थर्ड वन इज इनकम। 3 पैरामीटर्स पर तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कैन वी हैव दैट? तो वो भी मिस हो जाएगा। सो देयर आर थिंग्स वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, बियॉन्ड दैट वो भी होना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ गुडनेस, इंडेक्स ऑफ गुडनेस, ऑल्सो हैप्पीनेस इंडेक्स। एक बार देखेंगे और प्लॉट करके देखिए व्हाट यू कैन डू। वी गेट दैट? सो आई एम क्लियर कि ऐसा नहीं है हमारे पास मैप बनेगा, बट कैन वी मेक अ मेंशन ऑफ दीस थिंग्स? डू वी हैव पैरामीटर्स एवरीवन? Parameters are also there. Parameters are also there. The thinkers are also there. The role of the geographer is also there. So looking at it from that perspective, things will make a difference to us. ठीक है everyone? अच्छा, इसी में एक चीज जरूर we must know that we must be able to distinguish social well-being from quality of life. So quality of life की definition दे दूं, इसी में देता हूं। Quality of life WHO ने define किया। The condition, quality of life, I'm giving you the definition. The condition of life resulting from the combination of effects of a complete range of factors such as those determining क्या क्या factors हैं? Health, happiness, education, social and intellectual attainment, freedom of action, freedoms भी होने चाहिए, justice, etc. ये सारी चीजें चाहिए भाई मुझे। अगर कुछ होना है तो I need all these things. If these things are there तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो गड़बड़ है। Everyone with me? If any questions, please ask. और इसके बाद और कहाँ पे पढ़ाऊंगा? I will be teaching this to be continued in perspective class. चलेगा? Perspective की क्लास में भी ये लेकर आऊंगा, quality of life and well-being. That is why I said, anyone who has completed the syllabus, उसको तो पता होगा, आप तो beginners हो, you're doing it for the first time, so that will also come. So have I touched upon that syllabus idea, and have I given you, somewhere where you can also be somewhere look into this, that how we can look at making this answer geographical also. Do not everywhere be caught with a map. Please understand, हर जगह map नहीं हो सकता. Do we have the criteria also? Social well-being, quality of life. And can I say social capital is a part of this thing, social well-being and quality of life? Can I say social capital will enhance the social well-being and quality of life? Can I say government policies are a little silent on this? अभी जो हमारी government policies हैं, are they actually taking this into account or not? Or mostly missing it? जल्दी से बताओ, taking it into account or mostly missing it? Mostly missing. So that's what I'm saying. This is where we are looking at material things. No, अभी हमें क्या दिया जा रहा है? सरकार हमें क्या देना चाहती है? गेहूं, अनाज, आटा, गैस सिलेंडर, yes or no? Developing world. Only this. श्रीलंका में क्या दिया जा रहा था? ये freebies दिए जा रहे थे. True or not? So think about it. Development has acquired bigger meanings, and one needs to understand all those things. If they are missing, then it is a very big challenge. I hope everyone got my idea in this. चलिए तो वापस आ जाए सिलेबस पे. So are we done with this social well-being, quality of life? We are done with this population and social capital also. Now let us look at world population problems. Not talking about this. So what are we going to do? थोड़ा सा brainstorming करेंगे. We will also give it a perspective point of view. तो perspective भी लेकर आना है.
So everyone, I want you to make a flowchart, whatever you can think of. Don't stop till you have at least 14 ideas. You can bring in the idea of perspectives also. You can bring in the idea of perspectives also. 14 ideas change. Let me say. Take a blank sheet, draw a spider web in the center. Quickly, quickly. Don't stop before 14 ideas at least. Okay, perfect. Whatever you got, let's see. And again, keeping in mind, how do we get a good answer on this? Okay, Priyanka, all students who've done that, let's see what you're contributing. Question comes on examine, bring out the problems of population problems. Food, water, energy, limited resource. Polami, don't you see that all of this is just 1 point resource availability? Priyanka, don't tell me 16. I just read, Polami, all of them are all of them are the same point only. Conflicts, war, एक ही है, conflict, war, tension, terrorism, civil strife. Perfect. Environmental crisis. Okay, ecological, environmental, pollution, crisis. प्रियंका एटमोस्फेरिक बायो ऑल दोस थिंग्स ये एक ही तरह का वो है एनवायरमेंट इकोलॉजिकल. ठीक है. हाइड्रो वाटर स्कैसिटी बेटा रिसोर्स ही तो है नहीं. वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन. फिर आप बोलोगे एजुकेशन, है ना. ये क्या है? ये सर्विसेज है. इफ दीज आर गुड्स, these are services. Disaster, social division. So I do see social problems, I do see economic problems, problems with social economy, all those things are there. I also see strategic problems, strategic global problems. Get that? Hard to direct people in one direction. तो शिवम ऐसे वाली अभी मैंने बताया था ना, इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, वॉफलिंग, जिसका कोई मतलब नहीं होता.
hard to direct people in one direction. Climate change due to anthroposphere. तो पूर्वी there is, आप फिर इंग्लिश भी गलत यूज करते हैं, because of anthroposphere, because of anthropogenic activities. और सिर्फ क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारी चीजें। ये तो कहना डेवलपमेंट मॉडल्स अनसस्टेनेबल मॉडल्स। ट्रू और नॉट? population problems can be non tangible problems also, no? Your problems of mind, mental, psychological, those are different problems. वो भी तो प्रॉब्लम में गिने जाएंगे कि नहीं? They should also be. Is everyone with me? हर प्रॉब्लम के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट। एवरीवन विद मी ऑन दिस? आई थिंक ऑल थिंग्स विल इंक्लूड इन दिस। परफेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर बात वही है कि सर आर नोट्स इनफ? नोट्स में तो यही बता दिया जाता है और यही लिखवा दिया जाता है। So everyone, this answer can be created and this answer will be what? General studies answer. How will you make it different? How would you make it different? So sixth mass extinction पूर्वी ऐसा क्यों सदमा मचा रहे हो आप? अपने वही वाला एंथ्रोपोस्फीयर वाला ही तो पॉइंट है ना, आप उसको क्यों फैला रहे हो? क्यों फैला रहे हो? ब्रेनस्टॉर्मिंग। एवरीवन, ब्रेनस्टॉर्मिंग में बता दूं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु फेक दैट दे हैव लर्नड ब्रेनस्टॉर्मिंग इन माय क्लासेस। दे कीप ऑन फेकिंग इट। मुझे वो लोग दिख भी जाते हैं, तो बेकार में उसको इंटेलेक्चुअलाइज मत करिए। मुझे इंडिविजुअली मैसेजेस भेज के अपने आंसर मत चेक करवाइए। मैं खास तौर पे हटा दूंगा भाई, अगर आप इसी में हो तो, है ना, कि आपकी जो है पॉइंट्स की। अगर मैं सेंटर में लिखूं मदर, अगर मैं सेंटर में लिखूं मदर, टेल मी हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी रिटन अबाउट अ मदर? Infinite or not? Infinite or not? If I replace the word mother with India, how many points are there? Infinite or not? Yes or no? Infinite points. India has tiger. Oh, India has lion also. But dolphin is the national aquatic mammal. अच्छा, हमारे पास तो white tiger भी। We have peacock also. जब उनको भूख लगती है तो मोदी जी मीटिंग छोड़कर पहले उनको खिलाते हैं। Yes or no? We have mangoes also. मोदी जी ने बताया नहीं कैसे खाते हैं, काट के या वैसे। We have guavas also. Down south I went, coconut water also. बट पाइनएप्पल का कोई मैच नहीं है। कितने पॉइंट हो सकते हैं ऐसे? इनफाइनाइट हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जान लिया करते हो क्लास में, सर मेरा वाला आंसर मैं सबमिट कर रहा हूँ, आपको प्लीज चेक कर देना। नहीं करूंगा भाई, कोई मतलब है उसका? तुम्हारे टाइगर लायन ये क्या है? इंडिया का एक पॉइंट वाइल्ड लाइफ। ट्रू और नॉट? व्हाट इज दिस वाइल्ड लाइफ? रिमेंबर जब स्टार्टिंग किया था, व्हेन इन माय अर्ली लेक्चर्स आई टोल्ड यू हाउ टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहला होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स आर इनफाइनाइट, इट इज मैडनेस। यू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग इन हेडिंग्स, हेडिंग्स आर फाइनाइट। ये जो मैंने यहाँ पर किया, किसी ने लिखा फूड, वाटर, एनर्जी, इनका ऑल दीज कम अंडर वन हेडिंग कॉल्ड एज रिसोर्सेस। आएगा नहीं आएगा? ये सब एक ही में आ जाएगा, रिसोर्सेस कहलाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई वांट एवरीवन टू सी एंड थिंक। इफ यू आर मैच्योरिंग, गुड। इफ यू आर नॉट मैच्योरिंग, देन प्लीज टेक टाइम टू मैच्योर। जिद करके मुझे जबरदस्ती मैसेजेस भेज के मत करिए, ठीक है? अभी आपने उसका बताया, फिर वोली ग्रिडले टर्टल बताओगे, फिर वेटलैंड बताओगे कि हमारे पास इतने वेटलैंड है। वो थोड़ी पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हो उसकी बात करें। मैं तो कह रहा हूँ कोचिंग करने के बाद बच्चा कहता है सर आपके नोट से हो जाएगा या बुक्स भी पढ़नी है। सो दैट रियली फेल्स द होल एजुकेशन। दैट रियली फेल्स द होल एजुकेशन। सर आपके मंदिर में पानी का चढ़ावा चढ़ता है या दूध का चढ़ावा चढ़ता है? सर वही वाला चढ़ाऊंगा सर। अरे यू आर इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, यू लुक एट द एग्जामिनेशन, इफ योर नोट्स एंड योर आंसर्स कैन डू जस्टिस टू दैट, समबडी रीड्स योर आंसर इन फुल ऑफ रिस्पेक्ट, वांट टू गिव यू मार्क्स, बहुत अच्छी बात है। इफ यू फाइंड योर आंसर लुक लाउजी आंसर्स, तो फेंक दे, तो छोड़ो नोट्स, छोड़ो आंसर यार, करो वो जो एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए। तो वही पॉइंट बार बार लिख रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए कई बार कहता हूँ, जो होमवर्क भी देता हूँ ना, डोंट डू इट मैकेनिकली, थोड़ा उस एरिया में आई वांट यू टू रीड सर्टेन थिंग्स इन दैट, दैट विल बी अ गुड थिंग। डेवलपमेंट मैपिंग, व्हाट इज हैपनिंग, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डू वी गेट दैट? तो अगर आप ये आंसर ऐसे लिखेंगे, if you write this, this answer is a GS level answer. True. This answer is an absolute GS level answer. This does not even carry any maturity. This is highly immature answer also. School, university, you could have written these answers, but the idea is take it to the next level. है ना? As human geography has come, we need to learn those answer writing also. So मुझे लगता है कि इस आंसर में to give maturity, I must give it a framework. किसी तरह का framework होना चाहिए. Do we get it? So problems are infinite. Problems are infinite. Whenever there is infinite thing, yesterday if you attended my class on climatic regions, whenever the problem is of infinite, what do we do, everyone? अगर infinite का issue है तो हम क्या करते हैं फिर? Categorize करते हैं, yes or no? We organize things. So मुझे लगता है कि मेरी problems can be categorized. Sectoral problems, economic, socio-cultural, politico, administrative, strategic, ecological. That can be sectoral. It can also be, problems can also be classified as
can also be classified as regional. Developed world or the global north, developing world or the global south. Flashpoints. What are flashpoints? Areas which are of particular concern, जहाँ बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है. Areas which are of particular concern. कौन से areas हैं? LDCs हैं, LDCs, Pacific Islands हो सकते हैं. Can you see geography in this? You can also do it at macro to micro. Global level problems, national level problems. So the problems of Pakistan or Sri Lanka at a global level and problems of Sri Lanka at a national level are two different problems or not? And societal and individual level. Possible. So a smart student would first think of organizing this. अगर आप organize नहीं करते हैं तब काम नहीं बनेगा. Think about it. So पहली चीज आप क्या करेंगे? First you will try and think of organizing it. Without that things won't happen. Is everyone with me on this or not? Are we clear on this, everyone? पहला तो ये क्लियर करना है. अगर ये क्लियर नहीं है तो चैलेंज है. नेक्स्ट मेरे पास एक और थ्योरेटिकल पैराडाइम है. इफ यू रिमेंबर, कौन थे? एडवर्ड एकरमैन. रिमेंबर द टाइप्स ऑफ रीजन्स. यूएस टाइप, ब्रिटिश टाइप, और क्या था? ब्राजील टाइप, इजिप्शियन टाइप. उसके बाद कौन सा था? अंटार्कटिक टाइप. हटा दो उसको. US type will have different problems. Everyone think about it. आपने problems लिखा, very good, perfect. But my job to convert it into an answer. US type, what is the problem of US? What is the problem of US? So Bill Clinton once remarked that the problem of US is a 14-year-old boy with a gun and a 14-year-old girl with a baby. Do you agree? इंडिया की प्रॉब्लम तो नहीं, इंडिया की प्रॉब्लम तो नहीं है ना. 15, कोई दिक्कत नहीं. आपने देखा वहां पे तो यूथ है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी. जुवेनाइल्स जो है वो क्राइम कर रहे हैं. छोटे बच्चे क्राइम्स में लगे हुए हैं. गलती से कैसे भी हो जाता है उनसे. पॉसिबल? एवरीवन विद मी ऑन दिस? यस और नो? True or not? I see that. I also see that people are saying migrants. I would say assimilation of migrants. America for Americans. Donald Trump की policies काफी hostile थी. True or not? Another thing is there is a lot of diversity over there. तो अब उस diversity में आप लोग किस तरह से करेंगे? That becomes a challenge. Assimilation of migrants. मुझे also लगता है कि यहाँ पर I also feel that there is a lot of inefficient, wasteful consumption patterns. Do you agree? Lot of waste generation, single use everything, no repair, nothing. अभी आपने सुना ना, no repair के बाद repair movement भी चला, right to repair. क्या हमें repair का भी right होना चाहिए? I don't want to do this, तो मुझे repair का भी right होना चाहिए. Heard of that everyone? True. जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी हमने कहा, वहीं पर आप क्राइम भी डाल सकते हो. क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल footprints are very high? Tremendous use of fertilizer, pesticides, commercial agriculture. Sometimes these countries become ground to showcase global disparities. So मैं कह रहा हूँ यहाँ की प्रॉब्लम, पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम है कि नहीं? पॉपुलेशन की बात हो रही. पॉपुलेशन डू वी हैव दैट? आज की डेट में कहने से इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, nowadays inflation, are we looking at that or not? 2022 लिखना वहाँ पे record inflation. So they have different type of a problem. अच्छा यूपीएससी ने पूछा हमसे, my mistake, spelling mistake over here, British
So what is the problem with British type? British and Japan भी पूछा था ना हमसे, similarity between British, Japan, Germany, West. So population में क्या है सबसे बड़ा, जल्दी से बताओ. Quickly, where बिल्कुल aging of population, old age care. अब ये तो हमने यूएस में नहीं लिखा. Do you see difference on that? Old age care. They have the money, they don't have the energy. No, have the energy and for doing other things. वो बहुत सारी चीजें missing है नहीं है. That's going to be a challenge. Clearly going to be a challenge for these areas. Yes, everyone with me on this? और बताइए यूरोप में अगर ये प्रॉब्लम है तो इनके पास वर्कफोर्स की भी प्रॉब्लम होगी. वर्कफोर्स, मैन पावर टू मैन देयर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर. ट्रू. Sorry. Sustaining the living standards. You have very high living standards. Sustaining the present living standards, challenge or not? The cost on the government is there. That is included ना. ट्रेड इम्बैलेंस क्या है? Sustaining the living standard. आपके पास उतना वर्कफोर्स नहीं है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पैसा नहीं है, तो आपके ऊपर एक चैलेंज आएगा या नहीं आएगा? That's going to be a challenge for you. Is everyone with me on this? अच्छा, you import workforce. They're coming over there. Did you see Sweden having clashes between Christians and Muslims? Christians and Muslims. Again, migrant assimilation. You don't have a policy. You will require migrants to come, but then there will be fight on that. So assimilation challenge, will it be there or not? Migrant assimilation is going to be a very big challenge on this. Okay, what else? Think about Japan, think about Germany, think about this thing. Energy crisis, अभी आपने देखा. Energy access, British type. Energy costly. Their resources have exploited. Their resource exploitation. Their resources are exploited now. Now their resources are no longer there. True. तो कहाँ से लाएंगे more resources? More forests. They have already chopped off their forest. They need to look at artificial carrying capacity. इनके लिए क्या चाहिए? Artificial carrying capacity. That is why you will see Japan investing in so many places. Yes or no? A major crisis, yes, refugees. So major is migration crisis. ग्रीस में आपने देखा ग्रीक माइग्रेशन क्राइसिस, रेफ्यूजीज एंड अदर थिंग्स, वो भी हमने देखा. आपने इकोनॉमिक क्राइसिस देखा है, सदर्न यूरोप economy going down. So when economy goes down, again the same thing, na, sustain that present living standard, that's a very big challenge. True. So tell me, 1 and 2, are they totally different in terms of their population problems or not? आपके तो common थे. You understand? Where brainstorming has limitations. Brainstorming will give you access to some ideas, but if you are not able to give them a method in the madness, फिर क्या होगा? Infinite points will be generated. Infinite points generate करते रहिए और खुश होते रहिए. आपको लगेगा हाँ मैं सही जा रहा हूँ. Is everyone with me on this? ठीक है? And very clearly, can they be shown on the map also? Third, मुझे बताओ Brazil type. Quickly, you tell me Brazil type की क्या problems है? British type का हो गया population problems. Remember, we are talking about population problems. It is easy to do that. It is easy to dictate. It is easy to make PowerPoints and give students that PDF and say मेरे नोट से पास होते हैं. कर ले भाई, तू ही कर ले. मेरे नोट से होने वाला तू ही कर ले. और भक्त है, भक्त करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं. I am भक्त only of result, and UPSC is my target. Deforestation, okay? हर्ष बोला पॉपुलेशन बर्डन. हर्ष जनरल मत बताओ, सोच के बताओ. पॉपुलेशन बर्डन तो मुझे लगता है इंडिया चाइना पे ज्यादा है. सोच कर बताएं, जल्दबाजी ना करें. क्विकली. रैपिड चेंज इन सोसाइटीज डिमांड. कभी कितनी बार तो बता चुका हूं, इसका मतलब वैफलिंग होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है. आपको नहीं लगता ये दिस विल अप्लाई टू यूएस आल्सो, रैपिड चेंज इन सोसाइटीज डिमांड. दिस विल अप्लाई टू ब्रिटिश आल्सो, रैपिड चेंज इन सोसाइटीज डिमांड. दिस विल अप्लाई टू बिहार आल्सो, रैपिड चेंज इन सोसाइटीज डिमांड. दिस विल अप्लाई टू झुमरी तलैया आल्सो, रैपिड चेंज इन सोसाइटीज डिमांड. आफ्टर 2 years ऑफ प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी हमें यही सेंटेंस लिखना है. यही तो सिखा रहे कोचिंग में डिक्टेट करके. टीचर्स ऐसे सेंटेंस लिखते हैं, यू सो हैप्पी, वाओ क्या लिख रहा है. इसका कोई मतलब नहीं भाई, ये सब जगह अप्लाई हो सकता है. रैपिड चेंज इन सोसाइटी डिमांड तो सबके लिए. एंड एडवर्ड एक्करमैन का आपको ये तो याद होगा यार, पीआरटी. ये तो अंडर पॉपुलेटेड वाले एरियाज हैं. पॉपुलेशन इज लो, रिसोर्सेज हाई.
पॉपुलेशन प्रेशर बता रहे हैं। ब्राजील टाइप, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन नॉट ऑप्टिमाइज्ड, फॉरेस्ट ऑन फायर, फॉरेस्ट ऑन फायर, स्मार्टली यूज करो ना, सस्टेनेबली क्यों नहीं यूज करते हो? बिकॉज यू डोंट हैव दैट मैन पावर, इवन रिसोर्स, मिनरल, मेटल रिसोर्स lead to a lot of pollution. You don't have the technology to use that. A lot of pollution. And the worst part is ecological resources. Ecological resources, one of the worst biodiversity loss is happening over here. ये इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ब्राजील टाइप, बड़े बड़े एरियाज, ब्लेस्ड विद नेचर्स बाउंटी, लेस पॉपुलेशन, लेस टेक्नोलॉजी, नॉट एबल टू ऑप्टिमाइज। ब्राजील का बता रहा हूँ, बहुत बड़ा क्लियर यहाँ पर है, अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। पूर्वी चमत्कार को नमस्कार करना बंद करो, सिर्फ वेनेजुएला के परे जाओ, अभी तो इन्फ्लेशन वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो रही है। अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, क्या बोलते हैं अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन? यू विल फाइंड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अभी सेटलमेंट ज्योग्राफी में कराऊंगा, प्राइमेट सिटी। Most of the population of the country lives where? In the capital city. Most of the population of the country lives in capital city. तो प्राइमेट सिटी क्या हो जाती? कैपिटल। ओवर पॉपुलेटेड, वहां पे सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे स्लम्स का है, बिग प्रॉब्लम्स, स्लम्स। ब्राजील में उसको बोलते हैं फवेलास, शैंटी टाउन्स, स्लम्स, फवेलास, शैंटी टाउन्स। लोगों के यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। किस चीज की प्रॉब्लम है? घर की, हाउसिंग, यस, फ्यूल, big problem, energy. Challenge on that. So population को ये problem होगी। और बताइए क्या है? Human resource skilling, human resource skilling, R&D, technology अभी low है, so they are not upskill the people, they are not able to upskill the people. That is the problem of Brazil type. Brazil type वो खुले एरिया जिनके पास रिसोर्स है डेवलपिंग, बट द टेक्नोलॉजी इज मिसिंग ऑन दैट। ट्रू। और क्या है ब्राजील टाइप? इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, अनसस्टेनेबल, यहीं पे एक्सेप्टेड पॉइंट डालते हैं, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। So when Amazon forests were burning, the fumes and everything was felt across the world, and especially in the major cities of Brazil, it was a challenge over there. With me on this? अब एक काम करते हैं, सबको मिला देते हैं, इन सबको मिला देते हैं। दैट बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ इजिप्ट टाइप। हमको सारी प्रॉब्लम्स, हमारे यहाँ माइग्रेशन भी प्रॉब्लम है, वर्क फोर्स इज ऑल्सो प्रॉब्लम, ओल्ड एज इज ऑल्सो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम और नॉट। नंबर 4, कैन आई से नंबर 4 इज दिस इजिप्ट टाइप, इजिप्शियन टाइप। रिमेंबर इजिप्शियन टाइप में क्या है? इजिप्ट तो है ही, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, ईस्ट एशिया, चाइना आता है इसमें। साउथ ईस्ट एशिया कम्स हियर, वेयर वाज दिस? ब्राजील टाइप हैज साउथ ईस्ट एशिया। अब ये भी हो सकता है कि सम ऑफ यू डोंट इवन रिमेंबर साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडेड इन दिस। सम ऑफ यू डोंट इवन नो व्हाट इज ब्रिटिश टाइप। ब्रिटिश टाइप इज वेस्टर्न यूरोप एंड जापान। यूएस टाइप इज व्हाट? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ये ऐसे वो जो भी कहता है यूएस टाइप इज दैट, बल्कि अर्जेंटीना भी उसमें आएगा ब्राजील टाइप में। इज एवरीवन ओके? So now that we are talking about population problems, you can understand that population problems must be seen from a different point of view. So can I say A, B, Europe type, sorry, British type, C, India will be Egyptian type. मैप बन सकता है, अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ट्रू और नॉट। सर फिफ्थ वन डेजर्ट नहीं लिया हमने, तो डेजर्ट की प्रॉब्लम ह्यूमन होंगे तब तो प्रॉब्लम होगी ना। When we not bother too much about the humans over there, can we go beyond this? Again saying, it cannot be just general talk in human geography. Human geography has to have other things also. You have to apply and brainstorming, not just getting ideas, but also thinking about regions. और इसमें contemporary case studies डालना जहां पर भी हो रहा होगा। Say for example, ethnic clashes in Sweden, war in Ukraine. So British type में आप लिखेंगे वेस्टर्न यूरोप में वॉर भी चल रहा है, ट्रू और नॉट। So यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रिटिश टाइप की प्रॉब्लम क्या है? जियोपॉलिटिकल। कैन आई ऐड जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक। स्वीडन ने आज लिखा है, आज के हिंदू में होगा, स्वीडन हैज फाइनली अप्लाइड दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वी नीड टू जॉइन ऑफिशियली, वी नीड टू जॉइन नेटो। डिड दे से यस और नो? डालिए उसमें ये सारी चीजें। Geopolitical crisis, that this thing to remain on top, और उस वजह से people are suffering, because idea is not about those regions. We are talking about the population problem. Can you see all the things which I have written are somewhere to do with population? I have not written in general problems. Is everyone okay? ठीक है, क्या टाइम हो गया? छोटा सा ब्रेक ले लें। We take a small break. What is the time? 9-minute break. Quickly. I'm here only. If you're back from the break, you can ask me questions. If you have doubts, you can ask questions also.
Everyone, are we back? Chale, then let us talk. What do we talk over here? Yes. So we're done with almost everything. Policies. So I said when we are talking about population policies, this comes more as paper 2. So should we not do anything in paper 1? So population policy. When it comes in paper 2, it is more centered over that idea is more centered over what has been India's population policy, and that I have already given you a hint that even pre-independence, Indians had the thought of controlling their population. I also told you that the population policy can be pro-natal. Say, for example, I give you an example of Russia, pro-birth, have more children, and anti-natal, India, China. We've tried to control that. Do we get that? So when we're talking about India, we see the evolution part of it from history, like जैसे किसी ने कहा temporal. So I've seen many teachers just enjoying the benefit that the student doesn't know anything. तो एक काम करते हैं, story सुनाना शुरू करते हैं. पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ. So that is what we are talking about. So that is not the aspect that is to be there, but still, a person, when we are talking about India, so sometimes they say critically evaluate the evolution of population policy paradigms in India. So then you need to know some history of it. But for the world, we need not know. Okay? So एक होता है pro-natal और anti-natal. अब इसी को I want to build on and give you a better understanding of this. Now Harsh is saying, sir, can we write or suggest extremist policies over here? I don't know where in the world will you find something called as an extremist policy on population. कहीं है तो बताओ मुझे, कहीं है तो बताओ. तो ये जो मजे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी, हाँ, सबको ह्यूमन बींग्स को कमरे में बंद करो और गैस डालो और जो है उससे सारे लोग मर जाएंगे. किल ऑल ह्यूमन बींग्स. थैनोस इज एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी. कहीं नहीं है वर्ल्ड में, कहीं पर नहीं है. हर्ष इज सेइंग वन चाइल्ड इन चाइना. तो एक्सट्रीमिस्ट क्या है? दैट इज देयर बिलीफ. दे आर नॉट अ डेमोक्रेसी, दे कैन इंपोज ऑन दैट. एक्सट्रीम क्या है उसमें? वन चाइल्ड. आई वांट टू, इट इज एन एंटीनेटल पॉलिसी. वन चाइल्ड इज एंटीनेटल. नो, एंटीनेटल बहुत जगह पर है. मजे से बैठे सर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी होता है. एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी कहां से लाते हो वर्ड्स यार? एंड इन इंडिया दे से 2 चिल्ड्रन और यू वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट जॉब. ऐसा कहीं नहीं है इंडिया में, वो तो पंचायती राज में आया बस. आप देख लीजिए 30 ईयर में, अभी भी इंडिया में तो कोई लॉ नहीं है. तो पहला तो हर्ष, ये वर्ड्स के ना कुछ मतलब होते हैं. वर्ड्स के कुछ मतलब होते हैं, ठीक है ना. तो हम अपने आइडियाज को यूज करते हैं प्रॉपर्ली. ये हमें टीचर्स ने लिखवाया, बहुत मजा आता है. हम एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी लिखे, नए वर्ड्स यूपीएससी के लिए नया सीखे हम. तो इवन फनी पार्ट इज दैट मेनी ऑफ यू हैव नॉट इवन मैच्योर्ड इन योर वोकैबुलरी. जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ और टीचर मार दिया एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी. एंटीनेटल है ना, इट्स अ गुड वर्ड, एंटीनेटल. इंडिया भी तो एंटीनेटल है, ठीक है. मेरा काम आपकी सोच को एक्सपैंड करना.
और मुझसे क्लास की शुरुआत में लोग पूछते हैं सर नोट से हो जाएगा, मैंने दूसरे एजुकेटर से किया। भाई हम अगर यही आपके पास मैसेज आया फ्रॉम यूपीएससी तो बड़ा लिमिटेड मैसेज आया, आई एम जस्ट एन इनपुट हियर, गो बियॉन्ड दैट। सर्च कोई एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी नहीं होती। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी सिर्फ थैनोस की पॉलिसी है कि यू नो लाइक किल पीपल, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी टू कंट्रोल पॉपुलेशन। आई हैवंट कम अक्रॉस एनी सच पॉलिसी एक्सेप्ट फॉर थैनोस। ठीक है, नाउ आई वांट टू टेल यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वुड बी व्हाट इज पॉलिसी। पॉलिसी इज अ टूल to direct the demographic evolution of a region, nation, to help in achieving other policy goals. अब एक बात बताओ, अगर ये पॉलिसी का मतलब है कहीं पे भी एक्सट्रीमिस्ट आएगा, सडनली did it change or not? Did I use any fancy English over here? कुछ भी बनावटी इंग्लिश मैंने लगाई यहाँ पर? पॉलिसी इज अ टूल। सर कैन वी राइट, सर कैन वी सजेस्ट एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज? बे सदमा देना बंद करो। अगर पॉलिसी का मतलब ये है, पॉलिसी इज अ टूल इन द हैंड ऑफ द प्लानर्स टू डायरेक्ट द डेमोग्राफिक एवोल्यूशन। एंड इफ द प्लानर्स फील कि भाई हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, which I told you at the time of independence, our freedom struggle leaders felt that India is entering demographic transition, that window will open up, let us control it. अच्छी बात है, तो उन्होंने पॉलिसी क्या रखी? एंटीनेटल रखी। रशिया में we said they bypassed it, so they are open for a pronatal policy. Policy will depend upon, तो क्या मैं कह सकता हूँ policy will be region specific? Policy will be time specific. With time it can change or not? Region specific, time specific. Why region specific? Because you know the needs of the region. Time specific, why? Because dynamism, the needs keep on changing. True or not? Policy also has to go with the socio-cultural ethos. होगा या नहीं होगा? Am I talking from some book? Am I mugged up from book? No, I am not mugged up. I am thinking and writing. I am thinking and writing. I want all my students, anyone who's come in my life as a student for me, I want he or she to have this ability. मेरे नोट्स काफी हैं, मुझे नहीं पता, जिंदगी नोट से नहीं चलती भाई। I am not going by any notes. I am saying it's a tool. It's a tool, and I want to tell you. I also want to tell you, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी पहले कहलाती थी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। इंडिया का पॉलिसी का नाम था पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, उसको हमने चेंज कर दिया। डू यू नो इट इज नो लॉन्गर कॉल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। इट इज नॉट कॉल्ड बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, इट इज कॉल्ड फैमिली वेलफेयर पॉलिसी। डू यू गेट दैट? अपने आप मतलब बदल गया, सिर्फ इतने से में बदल जाता है। The policy is that your population is a resource. Population is a resource. Tell me, do we have a spectrum allocation policy? Do we have a coal block policy? है या नहीं है? कभी किसी के दिमाग में आया सर can we have an extremist policy for spectrum allocation? Does anyone get that? Do we get that? So population can be seen as a number, qualitative or sorry quantitative, quantitative. तो हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए। Everyone, should a government have a policy? If I need more workforce, if I see the future more workforce, can I be pronatal? I have more resources. Brazil, Latin America, lot of resources are there. Technology is less. I have this thing, मेरे पास डिमांड है, मैं क्वांटिटेटिव रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ? जल्दी से बताओ। तो मेरी पॉलिसी वैसी होनी चाहिए। What's wrong with that? ठीक है। अच्छा, चाइना went for antenatal one child policy. China went for that. अब उसके consequences हैं। Whatever decision you take, there is a consequence to that. China is also patriarchal. So because of one child policy, what happened? There was preference for male child. So the problem came with the sex ratio. What happened? The sex ratio of China started showing a problem. So the government had to take that back. Yes or no? One child policy. Government ने वापस भी ले लिया. And now the issue is more about the gender composition. हो सकता है? Possible or not? Quantitative. Population can also be qualitative. Population policy can also be quality, standard of living, quality of life. Yes or no? Social well-being. True. Quality. Should we accept some migrants or not? वो भी तो population policy से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? If Europeans are making a population policy, they must keep in mind that a huge component of their population will come from migrant population. Yes or no? आपने देखा यूएस का 10% से ऊपर population is migrant population. Now 10% is a huge number. True or not? With that percentage of population, can they win local elections also? Can there be political ramifications of that? So 10% of the country's population बाहर से आए हुए, उन्होंने गुटबाजी की और उसके बाद they create their own electoral banks. So big challenge or not? आ सकता है? Quality मुझे decide करनी है कि नहीं करनी? Australia allows only skilled migration. वो फैमिली माइग्रेशन भी अलाउ नहीं करता। अपनी फैमिली को लेकर आएंगे, वो कहेंगे these are points, these are the criteria. On these criteria, if a family is there, तब तो हम मानेंगे, otherwise bye bye, sorry. Is everyone with me on this? True. सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो population policy, now tell me an extremist policy on this.
Big problem or not? So first of all, we must understand what is population policy. Population policy is a tool to direct the demographic evolution of a region. It is actually used by demographers. Demographers give inputs. So demographer कैसे input देगा? He studies the data. ऐसा ना? So मैं आपको बताना चाहता हूँ everyone. What have I made, everyone? What have I made? So DTT. One, two, three, 4, 5. You know how demographer sees it? How demographer sees it? He has a statistical tool. He has a statistical tool. What is this? This is called age, sex pyramid. Where he takes this line, x-axis. On this side are females. On this side are males, arranged in different age groups. Age cohorts. Cohorts means age groups. Age के groups बना रखे. Age cohorts or age groups are there. Zero to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, है ना? जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ तक पहुंच गई? 82 तक पहुंच गई कि नहीं? So they have the data on number of girl child itne 0 to 5 year. They put it as a pyramid, as a bar. So the number represents the size of population of males and size of population of females. Look at it. 10 वालों का भी लिया. Get it? इस ग्रुप को बोलते हैं, this cohort 0 to 14 is called the young dependent. Do we get it? Then we plot the next one and it is generally seen that with age वो सारे groups कम होते जाते हैं and everything, and then we come to this 60. The pyramid comes like this. Is everyone okay? The pyramidal shape में it acquires a pyramidal shape and these are the different cohorts in that. Is everyone okay? What are these people called? What is this young dependent? इनको क्या बोलते हैं? Working age population. Working age, youth नहीं बोलेंगे इनको, ठीक है? When you are 60, are you youth? पूर्वी. तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है. 15 से आप जो है वर्क में आ जाते हैं और 60 आपकी रिटायरमेंट एज होती है. Working age population 15 to 60 is called working age population. Everyone with me on this? Working age population. I hope you understand what I'm saying and you're getting the message. ठीक है. इसके ऊपर क्या आता है? What is after this, everyone? Quickly tell me what is after this. Old age dependent. तो ये यहाँ पर आ गए old age dependent. More than 60 or more than 65? 60 or 65 or both? Everyone? 60, 65 or both? How both? It has to be one only, no? Either 60 or 65. So which one? जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे डेवलपिंग वर्ल्ड में because the life expectancy is low, so the retirement age is 60. But in developed world, life expectancy is more. Retirement age is 65. समझ में रैंडम नहीं है, तुक्का नहीं लगाना है. You will find pyramids will be different. अच्छा एक बात बताइए, अफगानिस्तान में everyone, if I have to make the pyramid of Afghanistan, when the life expectancy is 45 to 60,
एक बात बताइए, 45 to 50, तो अफगानिस्तान का तो पिरामिड ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना। Everyone, can you see Afghanistan's pyramid will finish? Do you understand? Different countries will have different pyramids. Different countries will have different pyramids. So मैं आपको एक पिरामिड दिखाना चाहता हूँ. Everyone, please pay attention. Do you get that? What is the difference in this pyramid compared to the ideal pyramid? जल्दी से बताइए. What is the difference? Quickly, if you can tell me. Vis-a-vis the ideal pyramid, what is the difference? Can you tell me? Somebody saying life expectancy. I did not even mention that. I did not give you the values very clearly. Males are more, females are less. Here the problem is sex ratio. Do you get that? So everyone, please understand. Can I say an age-sex pyramid? Age-sex pyramid is like the skeleton of the population makeup of a country. True. Whatever is the base, that signifies number of children. No? After 15 years, the base will shift up. Will it keep going up or not? Yes. Because of China's one-child norm, China के pyramid में somewhere in 2-3 layers will the number of girl child be less or not? True, everyone. Do you get that? So a sex pyramid, age-sex pyramid, the gender and the age. Afghanistan, can I say that Afghanistan is having low height? Low height means this is a developing country, does not have high life expectancy. Does it tell me this also? If there is a shift in this, that's also there. So I want to tell you, this is Europe ka pyramid. Very interesting pyramid. Europe ka pyramid in the last 100 years. Everyone, can you see this place? 19, I can say this signifies 1940 to 50. This is it. Can you tell me what has happened in Europe's pyramid? World War time, sir. Men went over there and they died. Yes or no? Do we get that? So is population and the study of population and the age-sex pyramid a good input for the policymakers? Everyone, is it a good input for the policymakers or not? Policymakers के लिए important चीज है या नहीं है? It is going to be a very, very important tool for the policymakers. Please try and understand. This is what we have. Everyone with me on this? चलिए और बताता हूँ. अब इस पर आ गया. Every stage has a characteristic pyramid. Every stage has a characteristic pyramid. देखना चाहिए. The pyramid of this is like this. Is everyone okay? Stage 1. That's why I've drawn this. If you've not drawn it, fresh page, turn it around, make the DTT, and make the pyramid. Keep it this size only because other pyramids will grow big in size. Other pyramids will grow big in size. Done. What is this poor medical care? High birth rate, death rate, 50. Yes, sir? That is the case. Life expectancy high or low? Low. So what will the population policy like? What will be the population policy here? Control the death rate? Yes or no? Give people the welfare? True. Should we or should we not? Now what happens is death rate is controlled. Everyone death rate is controlled. And generally death happens when the child is born. So can I say that now if this was the width of the pyramid will increase more. This time the pyramid's base will be wider. More children are taking birth and they are surviving also. And because people are dying later, can I say the height will also increase a bit? Is everyone okay? So how should the pyramid look like? Is everyone okay with the pyramid? Can you see what change has happened? The height has increased and widening of base, wider base, taller pyramid. Makes sense? True. Because birth rates were high, no?
Birth rate continued to be high, but death rate has come down. So as a result, you are living longer. You are living longer, and the children who are born, they will also survive. So will the base widen or not? Everyone with me on this? Will the base widen? सही जा रहे हैं हम लोग? अगर आपको ठीक लग रहा हो तो. There's a proper thing in this when we're talking about population policies. They will keep this in mind. They will keep all this in their mind. चलिए और देखते फिर अब क्या हुआ. Now the birth rate also starts coming down. So can I say the base will shrink again? The base will shrink again. True. But this one, which was wider, will it shift a little up? True or not? Can I expect this? And will the height of the pyramid further increase? Is everyone okay? The pyramid has changed. Bulge rises. Bulge in center. So एक बात बताइए. These are the old age people. These are the working age people. And these are the young dependent or children. Young dependent. First case, Africa. Does it have a problem of old age people? Does it have a problem of old age people? No. So the policy makers should focus on old or the young dependents, children. True or not? अच्छा, we were talking about Burundi. Remember, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए. Children are more. There are more children over there. Youth भी है. The focus should also अभी भी क्या होना चाहिए? Focus should be child maternal care. Yes or no? Will old people be in the focus? Tell me. Will old people be in the focus as of now? Yes or no? Not necessary sir. वो तो problem ही नहीं खड़ी है अभी तो. True. Perfect. Now let us come to this stage. Which one is the problem here? Which one is the biggest chunk of the population? Now the working age is there. Depends. Yes or no? So that's what we are having. Sometimes you can have a variant where the bulge is so big. The bulge can be further bigger if you allowed the baby boom to happen. Yes or no? Because this is what? Baby boom or not? Is everyone with me? Fourth stage, what happens? The base is narrow. The base is still narrow. And the bulge has gone up. The bulge has gone up. True. Bulge has gone up. True or not? And more or less what has happened is the population has stabilized. They're cancelling out, no? So they are more or less like this. इसको बोलते हैं cylindrical. Is everyone okay? Now can you see old age is becoming a problem? Fourth stage. China entering fourth stage. Old age will become a problem and a challenge for China or not? Everyone tell me. होगा या नहीं होगा? Big challenge for China or not? It is going to be a big challenge for China. किसी भी कंट्री के लिए. Can I say Chad, Niger, Nigeria, India, China. सर इस वाले स्टेज में क्या होगा? फिफ्थ स्टेज में. वो फिफ्थ स्टेज इज अ डेंजरस वन. फिफ्थ स्टेज में क्या हो जाएगा? Inverted pyramid, inverted cylinder. In fact, the base of the cylinder becomes wider. Fifth one, do you want to know? Fifth one, fifth stage. So actually your birth rate has reduced. So this is shrinking, and this is your old population. This is your working population, and children. This thing. Is everyone okay? Inverted. Everyone tell me now, is there any question of going for an extremist policy anywhere? Policy is a tool depending upon what is the makeup of your population. And here, can you see this is mostly quantitative only? Quantitative. There can be many qualitative attributes or not. Can you bring in the use of migration to help you with that? Because remember, demographic transition is based on only birth rate and death rate. If there is a skill shortage, can I allow migration or not? Yes. तो आप देखो कनाडा में सिटीजनशिप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है. कनाडा को लोग चाहिए, कनाडा ले लेता है, कनाडा बिल्कुल वो करता है. यूरोप में यू विल फाइंड ग्रीस एंड ऑल दैट. यू इन्वेस्ट ओवर देयर 5-6 करोड़ रुपए जाकर इन्वेस्ट कर दीजिए. पोर्चुगल में एक बढ़िया सा वहां पर विला खोल लीजिए. यू ओपन अ विला कम रेस्टोरेंट 5-6 करोड़ रुपीस इन पोर्चुगल. दे विल गिव यू द सिटीजनशिप आल्सो. यू कैन बाय द सिटीजनशिप. सोचिए, you can very well do that. Everyone, please try and understand. Very much possible. Very much possible. Everyone with me on this? If any question, please ask.
Clear? Now tell me again, India में तो आएगा question. What has been India's population policy? Critically analyze India's population policy. Talk in terms of total fertility rate. Talk in terms of how the birth rate has been modified. They will also say a question can be the results of population policy in India. Results of population policy in India have been different from South India compared to North India. Yes or no? एक फेमस क्वेश्चन है हमारे पास जो हम अक्सर बच्चों से पूछा करते हैं. डेमोग्राफिक डिविडेंड demographic transition, sorry. Demographic transition has created a demographic divide in India. Think about it. What am I talking about? So I'll be talking about this in paper 2. अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए. If you can think of something quickly. Not south divide in terms of demographic dividend तो नहीं मैं कहूँगा. इधर क्या हो चुका है? They have reached stage 3 and stage 4. These are caught still in stage 2 and 3. Kerala has reached 5. Kerala to stage 5 में पहुंच गया. So southern states have completed the transition. Their population is stabilized. They are still in the mid of transition, so their population continues to grow fast. And did you see, Kerala is generally requesting the center that the fund allocation, the sharing of funds between center and state should not be done on the basis of population. Are you punishing us for population control? We have controlled our population. We are not growing it. You are saying funds will be based on population. Then UP and Bihar will get more funds. Whereas we have done our good homework. We have made our population get stabilized. Do we get that? Southern states have less demographic dividend due to more aging population. Brijesh, पता नहीं क्या कह रहे हो. But I hope you got my idea. Everyone who's listening to me, did you get my idea? समझ में आ गया? With me on this? चलिए वापस आते हैं. So population policy, can it be a big tool in deciding the quality and quantity of human resource of a country, population of a country? अगर कुछ लोग, कुछ elements, मुझे ऐसा लगता है, if some people, some sections of the society are offended by something. Say for example, India is a predominantly vegetarian country with a lot of beef. This thing, question on beef, that beef should not be consumed in India. Yes or no? So that is the qualitative aspect of my population. Can there be a regional policy that looks into this, and so that people's this thing are not offended, they look at regulating beef. But then the question comes: social well-being. Do people not have a right to eat whatever they want to eat? Does that debate come in the society or not? True. India has been traditionally a big beef exporter also. True. I also want to tell you, dead cattle meat, and the cattle, and especially old cattle, they were generally used for that meat also. There is a global demand for meat also. Population policy, socio-cultural, socio-economics, geopolitical, सब कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? सोचना चाहिए. I think population should be thinking of that. होना चाहिए. Sex ratio. अच्छा, किसी चीज को आपको improve करना है. Say for example, the sex ratio was going down. So the government can it because it knows, can it attach certain incentives to certain things? कर सकते हैं. Demographic policy से can we attach incentive? Can we incentivize intercaste marriages? Maharashtra may otherwise also, intercaste marriages to do away with this caste discrimination amongst the people of the country. Intercaste marriage would help or not? अगर state उसमें आपको योगदान करने लगे कि it promotes intercaste marriage तो क्या बुरा है? But कुछ जगह पर intercaste marriage is totally this thing. पंचायत एकदम उसके खिलाफ है. Socio-cultural things. Government has certain policy instruments. Policy instruments are tools in the hands of the government to direct the demographic future of a country. And when the government is doing that, why would the government be responsible? Why do you doubt the government? Government अच्छा काम करेगी, क्यों नहीं करेगी? Is everyone with me? Are you understanding what I'm trying to say here? सब लोग मेरे साथ हैं? चलिए, एक अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेज आता है in the demographic evolution of a country, where the center of the pyramid is heavy and the top and the base are not so heavy. So I'm not being able to draw it properly. थोड़ा symmetrical नहीं बना है, तो आप मान लीजिए कि symmetrical है. ठीक है? This bulge is named as a situation. This situation of bulge is named as demographic dividend situation. Demographic dividend situation. जनांकीय लाभांश. What is demographic dividend? And countries, their population policies are aimed at optimizing their demographic dividends. In fact, the East Asian tigers, if you have heard of them, Southeast Asia की जो countries हैं, they became Southeast Asian tigers, ASEAN, they became so important because their governments were able to
tapping into the demographic dividend. In fact, China became a huge manufacturing hub of the world because China was able to tap into the demographic dividend of the country. Get that? So what is demographic dividend? जल्दी बताइए. If any of you can think of. क्या होता है demographic dividend? जनांकीय लाभांश क्या होता है? Population that contributes to GDP. पूर्व ऐसा होता नहीं है. कुछ चीजें आपने कुछ चीजें मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया. कोशिश तो करो कि क्या है. Population that contributes in GDP. And what if it does not contribute in GDP? Then it will not be demographic dividend. Working age population is dividend. मुझे नहीं पता भाई. The capacity and potential of a working population. Less young population, so problems of working age. चलिए, let me help you with this. So पहला तो can I say demographic dividend get divided in proportion? नहीं मधुकर, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है? You have no clue about this. So let me write it down. It is a stage in the demographic evolution of a country. पहला क्या है? It is a stage. So when I say stage, stage means can it end also? Can it end a stage? It is a stage. I personally call it a window of opportunity. Opportunity. It's a window of opportunity. एक अवसर है आपके पास, एक अवसर है, opportunity है जिसको एक country tap कर सकती है through its population policies. It is a stage in the demographic evolution characterized by, क्या इसमें होता है? Characterized by what? Characterized by a situation where the working age population far exceeds the dependent population. तो पहला तो स्टेज है, क्या है? वर्किंग एज, WA, वर्किंग एज, डिपेंडेंट, ओल्ड डिपेंडेंट एंड यंग डिपेंडेंट. वर्किंग एज फार एक्सीड्स. तो पहला तो ये समझना डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक सिचुएशन है इन विच द इक्वेशन इज लाइक दिस. ठीक है? हर्ष इज सेइंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन वैल्यूएबल टू नेशंस ग्रोथ. नहीं, ये है. अब ये प्रोडक्टिव है नहीं है ये पता नहीं. दिस इज जस्ट अ सिचुएशन which may act as an economic asset producing more for the economy. So मधुकर आप देख रहे हैं वर्किंग पॉपुलेशन गेट डिवाइड इन प्रोपोर्शन, इसका कोई मतलब ही नहीं है. ये इंग्लिश भी रॉन्ग है, इसका कोई मतलब नहीं है. सिंपल सी बात है. अ स्टेज इन विच दैट थिंग इज मोर. इज एवरीवन ओके? So if I say what is जब हम उसकी बात करते हैं adolescence, what is adolescence? So adolescence is an age from child to a youth. एक adolescent age आती है जब हमारी दाढ़ी आने लगती है लड़कों की. यस, बॉडी में फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं. स्टेज है ना. तो डेमोग्राफिक इवोल्यूशन का एक स्टेज है डेमोग्राफिक डिविडेंड. डिविडेंड मींस डिविडेंड का मतलब लाभांश, लाभ का अंश. सो इकोनॉमिक एडवांटेज कैन बी मे बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सिचुएशन. इट इज नॉट अ गारंटी. ठीक है? तो ये क्या है? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हर कंट्री के लिए खुलती है. ठीक है? अ टेम्पररी विंडो opens as the country makes DTT journey. Is everyone okay? So I was saying, why is it not this thing? See, everyone, I have seen some students writing, probably they picked it up from the book or from some notes, that the worker population exceeds other. See, worker is not the right word because every person who is in working age may not be employed. Do you understand? You understand what is the error over there? Worker population is more than dependents. No. Worker तो वो होता है ना. Worker is a category. There are 9 categories of workers in an economy. तो ये worker नहीं है भाई. ये working age के population. Suppose these working age people are busy with Zuba Kesari and finding मंदिर कहाँ बनेगा. Yes or no? Do you think they will be a demographic asset?
if they are going and destroying public property, are they demographic asset? Are they a dividend? So dividend is a temporary window. It is not permanent. It comes during a phase in the demographic evolution, and the country's the country's planners, policy makers should be ready to tap it. समझ रहे हो आप? Sorry, everyone, you समझ लो. मधुकर बोला सर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस? मधुकर, इतने मासूम कैसे हो तुम? ये बताएगा ना, चलिए पता कैसे चलेगा? डेमोग्राफर डेटा, डेमोग्राफर डेटा, इतने मासूम कैसे भाई? इतनी देर से तो बता रहे हैं, यही तो काम है. व्हाट इज द वर्क ऑफ अ पॉलिसी? एक बात बताओ, इंडिया को अपनी कोल पॉलिसी बनानी है. इंडिया हैज टू मेक अ पॉलिसी ऑन कोल. सो विल इंडिया हैव डेटा? नो. व्हाट इज द डिमांड ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट्स? व्हाट इज द सप्लाई? डू वी नीड टू इंपोर्ट और नॉट? ऐसी बनती है ना पॉलिसी. बोले सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि देयर इज अ कोल शॉर्टेज इन द कंट्री? अरे देयर इज अ इन्वेंटरी एंड देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई. वी नो दैट और नॉट? सबसे तो ये बता रहा हूं, किसी ने इसीलिए तो पूछा था मुझसे, सर पॉपुलेशन पॉलिसी, कैन वी हैव अ एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी? बाबा, इट इज अ टूल. समझ रहे हो? ये यहां से मधुकर ये लिखा था मैंने, डेमोग्राफर्स गिव इनपुट्स. हर कंट्री का ये आता है भाई. और क्योंकि आपके लिए एक नई चीज है, लिटिल सरप्राइज, यू टेल मी, आप प्रिपेयर तो काफी टाइम से कर रहे कि आपको जानकारी नहीं, मैं फिर भी आपको बढ़िया जानकारी देता हूँ. यूरोप, यूरोप गॉट दिस इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में यूरोप का हो गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ठीक है, 19 टू अर्ली 20th सेंचुरी. 18 है, 20 सॉरी 20th टू 21st सेंचुरी. ठीक बोला मैं? एंड ऑफ 20th सेंचुरी लिखता है. वर्ल्ड वॉर 2 के पास टिल 1960s ओवर. विंडो ओपन एंड क्लोज. इज एवरीवन ओके? उसके बाद आ गए ईस्ट एशिया. 1970s में दे एक्सप्लॉइटेड is not a very good word, harnessed is extract the best, the demographic window. Is everyone okay? After that 1990s 2010 तक China harnessed this. harness कह दीजिए, हार्वेस्ट भी कह सकते हैं. डिविडेंड, डी याद रखना, डी मत लिखना. पता नहीं बहुत से लोग टी लिखते हैं, डिविडेंड क्यों लिखते हैं मुझे नहीं पता, बट देयर आर पीपल हु डू दैट. सो जस्ट इन्फॉर्म मी. इज एवरीवन ओके विद दिस? बाय 2010 हो गया चाइना का. चाइना फिनितो. चाइना टर्न्ड इनटू व्हाट? वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरर. ये क्या बन गया? ईस्ट एशियन टाइगर्स. है दैट विंडो ओपनड फॉर इंडिया in 2010 will last up to 20, 40 or 50. It will last up to this. Everyone okay? The window opened for India in 2010, so this is a temporary window. 30 से 40 साल खुली रहेगी. 30 to 40 years का window है. You can change the fate. Can you see? चाइना ने अपना fate बदल लिया. ईस्ट एशिया, यूरोप, सबने अपना काम कर लिया. And window is still closed. Window is yet to open for Africa. Will open after 2050. Everyone, why hasn't it opened for Africa? जल्दी से बताओ. If you are understanding the concepts, why has it not opened for Africa? Quickly. देखो प्रियंका, हाई टच रेट. बेटा सुनो, सिंपल, अभी यहीं पर है अफ्रीका बच्चे. जब पहुंचेगा तभी तो आएगा. इंडिया, चाइना और फिर जापान. डू वी अंडरस्टैंड? सर उनका ये है, नो हाई वर्किंग पॉपुलेशन. अरे आई एम आस्किंग यू, इसलिए बताया था ये. थिंक एंड लिंक नहीं होता. सर जी टीचर के नोट से हो जाएगा, हो तो जाएगा, तुम हो के नहीं हो. डू वी गेट दैट? सिंपल इसलिए बनाया था. व्हाई डू आई डू दिस इन द क्लास? सी, notes are available. No, notes are available. If we don't have this, how will we link? Very simple answer, no. To reach that stage you have to grow. That is why what is demographic dividend? It is a stage. So एक बार क्वेश्चन है यूपीएससी ने, मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैन हैपन मेनी टाइम्स. कैन इट हैपन मेनी टाइम्स? कैन इट हैपन मेनी टाइम्स? एक ही बार होगा चाचा. डेमोग्राफिक डिविडेंड विल कम वंस. अब एक बात बताइए एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. ऑनेस्टली बताना, बहुत से लोग भक्त भी हैं यहाँ पर, उनको भी पूछना चाहता हूँ. 2010 से 2050, is it not the national duty of all politicians, all leaders, all bureaucrats, all judges to ensure that the demographic dividend is harnessed? Dividend is constructively employed. आप समझ रहे हैं? Economy should have the capacity to absorb this excess workforce. Economy of the country should have excess capacity
to absorb this excess workforce. 2010 say, my dear friends, 12 years are gone. Do you think our economy has expanded to absorb? Do you think our youth has been constructively directed to participate in the economy or some other debates? Think about it. I also want to tell you, everyone who's listening to me, if you become an IAS officer, your career is the time when the country is going through this demographic dividend. If you choose to be corrupt, if you choose to allow paper to get leaked, if you choose to allow the politicians to get their way, divide the country and misguide the youth, you're actually anti-national. Do you get that? This is the time when nation building is happening. एक टाइम था नेहरू गांधी कर गए जो कर गए यार, उनका नेशन बिल्डिंग था. You will be a part of nation building. You don't even know what role the world wants from you, the country wants from you. समझ रहे हो? पॉपुलेशन पॉलिसी किसी ने पूछा सर कैन इट बी एक्सट्रीमिस्ट, आप सोचिए कोई एक्सट्रीमिस्ट बनाएगा? स्किल इंडिया मिशन है, स्टार्टअप इंडिया मिशन है, रन इंडिया मिशन है, मेक इन इंडिया मिशन है, लेकिन पिछले 7 सालों में क्या रोजगार बढ़े हैं? अब तो रोजगार पब्लिक ढूंढ ही नहीं रही है, सब अपने टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, बट सब कुछ पॉलिटिशियन को इसके बारे में पता भी नहीं होगा. सर्वेश्वर, मैं तो कह रहा हूँ लोगों को भी नहीं पता ना. दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड. हु न्यू अबाउट दैट बायोडाइवर्सिटी डेकेड, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज? और बच्चे, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे पॉलिसी मेकर को तो पता होगा ना. Yes or no, Sarveshwar? Not everyone is running the country. A rickshaw puller is not expected to do that, but my leaders are expected to do that or not? True. We choose our leaders. अब आप कह रहे हैं सर बहुत से politicians को नहीं पता होगा. सर्वेश्वर हम ही ने choose किया ना. And are we demanding from them this? They are giving us fear in our minds, and we are saying हाँ, please do this. आप यही करते रहिए, तांडव करते रहिए, जो भी आपको करना है. Keep on dividing us. We will keep on taking sides. यही तो क्लास में तो बोलो, student rights proud to be a भक्त. Demographic dividend है. तो proud to be a भक्त को आप बना दीजिए आईएएस ऑफिसर. ट्रू. सोच के देखिए. We might be envious and jealous of China. China was able to use that workforce. In fact, I want to tell you, the labor cost in China is increasing. इंडिया में अभी भी सस्ते में काम हो रहा है. और सच बताऊं, why should Indian workforce be doing only stupid menial jobs? उनको अच्छी क्वालिटी जॉब्स का डिजर्व करते कि नहीं करते एवरीवन? Do they deserve good quality jobs? You people from good education background, आपने इंजीनियरिंग किया, ये किया, अच्छी ग्रेजुएशन की, do you deserve good jobs or not? And when I say that even pakoda is a job, absolutely correct, pakoda is a job. Will pakoda, primary sector of economy, secondary sector of economy, third sector, tertiary sector of economy, which will be this thing doing me greater dividend? आप बताइए. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है. एक बात बताइए, देयर इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर नेक्स्ट 40 years. In 40 years, if you have the manpower of the country, would you want to put them in primary sector, secondary sector, tertiary sector, keeping in view the returns associated? Which one gives the maximum returns? Which one gives the maximum returns? Primary, secondary or tertiary? ज्यादा पैसा किसमें कमाया जाता है? जल्दी बताइए. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. चंदे, आप अभी तक यही सोच रही हैं कि सेकेंडरी में, अरे भाई टर्शियरी सर्विस सेक्टर में कितना पैसा, देखो फिल्म बनाते कि नहीं बनाते हैं, और फिल्म कितना करोड़ों का बिजनेस करती है कि नहीं करती. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिसाइड, कंट्री रिक्वायर्स प्राइमरी गुड्स, secondary goods and tertiary goods. तीनों चाहिए ना कंट्री को. We also know that primary goods do not produce that much returns. Remember, agriculture में उतना GDP का role is shrinking or not, everyone? Do you know that? In the GDP, I'm just connecting economics. Is the role of contribution of service sector increasing or not? So क्या हम अपने लोगों की skilling can we do in proportion of the demands of the country, and the beautiful aspirations of the country? ये कह देना $5 trillion economy का कोई मतलब नहीं है ना. Everyone think about it. $5 trillion dollar economy may just be this thing. Are we actually planning that? Primary sector people, be it fisherman, be it farmer, be it animal husbandry fellow, उसको क्या मिल सकता है? Yes, manufacturing को क्या मिल सकता है और tertiary को क्या मिल सकता है? और इन सारों को आप मान के चलिए, if you are the boss and they are your workforce and you are deciding the fate of the country, उस पेन को चलाने में, moving the pen which will give all the permissions, do you feel there is going to be a huge responsibility? And I'm still shocked with that question which I got in the beginning. Please don't take it personally. Sir, क्या note से हो जाएगा? Because there are many bureaucrats who are looking at what did the fellow before me did on this file. They are looking for precedents. They do not have innovative thinking. Left brainers are looking for notes. मैं तो ये भी कह रहा हूँ, तो पहली बार क्लास में आए थे जो भी थे, आप लोग तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं. लेफ्ट एंड राइट ब्रेनर्स, think about it. Getting into civil services is going to be a very, very responsible job. So even existing industries experiencing huge loss. Jute mill in Bengal lost thousands of jobs. Madhukar, बहुत सारा industrial sickness है, no doubt about that. So I'm to saying, as an industry minister, as an agriculture minister, as a service sector regulator, I would be providing more opportunities, because remember, demographic dividend in itself, remember, in itself is not a guarantee to growth. It is a opportunity to growth. Everyone, you are eligible to become a civil servant from 21 to 32. यही चल रहा है इधर ही, 21 to 32 चल रहा है. Because there is an age bracket does not mean it's a guarantee that you will become an IAS officer in 21 to 32. What is it? It's just a window of opportunity. If I am 43 now, so I cannot apply this. If somebody is 16, he cannot apply this. You are in this window, but because you are in this window, does it guarantee that you will become IAS officer? No. And I want to tell you, many people use this window to fool around.
हम तो देखिए आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं और जैसे ही हमारा प्रीलिम हुआ फिर मेंस दे देंगे और इंटरव्यू तो जानते ही आप हमारा पर्सनैलिटी, तो आईएएस बनते फिर तो भोकाल ही रहेगा, है ना। और तभी से लाइक एवरीबॉडी आईएएस की तैयारी एंड इन इंडिया में भोकाल बहुत मचाया जाता है। 21 टू 32 घूम रहे हैं और कैसे सवाल पूछते हैं आप देख लीजिए। आईएएस की तैयारी इज अ नेशनल हॉबी, उस पर रिश्ते तैयार। अच्छा आपने भी पीटी दिया, मैंने भी पीटी दिया, सेम क्वालिफिकेशन, लेटेस्ट मैरिज प्रपोजल। अच्छा मेंस तक दिए हैं तो बहुत आगे चले। अरे हमने लड़की तो केवल पीटी ही दी है, देखिएगा रिश्ता हो सकता है। ट्रू और नॉट? सो वेरी वेरी क्लियर, इट्स अ ब्यूटीफुल विंडो। कितनी जा चुकी है सोचो, अभी भी डिवाइड एंड रूल चल रहा है, कितने साल जा चुके हैं? 12 आर गॉन, वी आर इन 22। nobody is attending my class to go into the policy, आप जाओगे। and remember people who are attending the class वो इसलिए कर रहे हैं भाई इसके नोट्स काम आते कि नहीं आते। अरे तो बहुत बोल रहा है यार, इज टीचिंग टू मच, आई हैव टू थिंक। अरे आई तो जस्ट वांट टू क्लियर द एग्जाम। ट्रू। सो आज का होमवर्क आई ऑलरेडी टोल्ड यू वेलबींग की मैपिंग करेंगे, ठीक है। टुडेज होमवर्क इज व्हाट? मैपिंग ऑफ वेलबींग। जो भी आपको मिलेगा एसबीआई वाला मैप बनाएंगे, फाइंड आउट कुछ वेलबींग के मैप्स, वेलबींग मैप्स, यस नो। एंड लुक एट हाउ कैन वी हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। थोड़ा पढ़ेंगे यार इस पर, अपने मन से प्लेन ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करो। आज आपको बताया और रटिए मत, खोला एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का अच्छा वेबसाइट, इसने डेमोग्राफिक डिविडेंड पे सब कुछ लिख दिया है। लुक एट दैट, हाउ विल इंडिया हार्नेस इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिकॉज इफ वी डू नॉट व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न इनटू डेमोग्राफिक लायबिलिटी। सभी लोग ध्यान दो, एवरीवन, आई डोंट नो वेदर यू सॉ इट और नॉट, फिर से बता रहा हूं। व्हेन इंडिया क्रॉसेस दिस स्टेज, व्हिच स्टेज विल इंडिया कम? Next stage will have old age problem. Now, if in your youth you earned well, you saved your money, will your old age go better or not? Yes. But if in your youth you were in crime, you were into Zuma Kesari, you were into eve tasing, chain snatching, yes or no? बुढ़ापे में कहाँ जाओगे भाई? Do we have social security? Does the country have funds to take care of your बुढ़ापा? Further curse or not? और प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड अ डिजास्टर दैट इसको चैनल किया जाए। With this thought provoking idea, I end the class. I'll see you tomorrow with a request. आप किसी और एजुकेटर से पढ़े मुझे नहीं पता, मेरे अगर स्टूडेंट हैं तो you know that apart from the classes you have to read books, you have to be aware of what is happening around you, think and link. I humbly keep myself as a person who can facilitate your learning. I am not that pseudo demigod, मेरे नोट से पास हो जाता है, आप ही के नोट से enough है। There will be many who are seeking that, unfortunately I am not. So thank you for growing and keep growing. Sir paper 2 कब से स्टार्ट होगा? पेपर 2 is starting बेटा on 2nd of June, फाउंडेशन के साथ शुरू होगा एंड बाय आई थिंक 14 जून तक हो जाएगा, ठीक है। पेपर 1 में जिन्होंने कर लिया है मेरे साथ उनको पेपर 2 बहुत स्ट्रांग जाएगा। फाउंडेशन विल हेल्प यू अदरवाइज आल्सो टू मेक पैच अप दोस गैप्स, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आई विल बी ओपनिंग द टेलीग्राम चैनल क्योंकि वहां पर भी तो बहुत सारे डेमोग्राफिक डिजास्टर्स आते हैं, सो डोंट वांट स्ट्रांग एलिमेंट्स टू एंटर ओवर देयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।